Anshika. I don't want to miss this out, यार. मतलब नहीं रहा जा रहा मेरे से. Some more people whom I don't know yet. Yes, we'll introduce you to everybody. उसके अलावा I think और भी थोड़े आ रहे हैं. Last minute पे थोड़े और लोग के इन आए हैं. So I think there will be 5-6 more people who will join and chill with you. So, but officially अच्छे से तो एक बार welcome करना ही चाहिए. Hello Basundhara, welcome to the Abstract Room. My name is Sankalp. We are meeting for the first time, but we have had chats on. On finally getting to meet the Abstract group. I'm so happy. Yes, I mean आपके लिए पूरा इसे live setup करना पड़ा आपको बुलाने के लिए. Okay, I don't know what to say to that, but nothing. मैं मस्ती में बोल रहा था. But like I'm glad that मतलब firstly also I'm also happy that so many people you already know are here, so that makes it easier for us or me also. Yeah, we are friends since a long time. वही आदरी है, गौरी है, अंशिका है, अर्नब है, सब हैं आपके हमारे फिल्म इंस्टाग्राम ग्रुप जिसे बोला जाता है. So उसके लोग हैं. So I hope you feel comfortable. We have a name for that. It's called the people in the group. You forgot the best. Where is best word? Yeah, best we won't explain how that name came. Please, not to hijack the live, please. For a different live session, वो अलग उसके लिए हो जाएगा. So guys, जैसे आपको सबको पता है, हमारा intention है to give Basundhara a taste of what it's like to be in an abstract session. But again, we are going to make it as chill, as random as possible as well, maintaining decent boundaries at the same time while speaking whenever we are speaking about our Bachpan and the films we have watched and all of that. But again, we'll try to wrap up by I think 11:30, whatever suits, however the vibe is going. Whenever Basundhara says कि चुप हो जाओ सब, हम चुप हो जाएंगे. बाकी and it might go on the whole night. Arey, you have no clue, I think, but these things do happen here in abstract. Like they go on imagine. forever. So yeah, like our intention would be to just have a good time. And again, Basundhara format कैसे रहता है ना हमारा? It's nothing too extraordinary or just it's just basically to start off. I'll ask or sprinkle down some questions here and there ताकि थोड़ा माहौल बना रहे, interesting रहे. उसके बाद में आपको सवाल पूछने हैं, बाकी लोगों को सवाल पूछने हैं, कुछ नए थॉट्स लाने हैं. Everybody can do that. There's no restriction on what you can talk about. There's no restriction on the format. Just one thing for everybody again, just make sure अगर एक बंदा बात करे तो एक ही बात करे, because it gets cut, सुनता नहीं है. And also when you are speaking, just make sure that you're not the only one who keeps speaking. So ये दो तीन चीजें ही है. And there's a raise hand option available if you want to speak. So you can speak. Obviously Basundhara is our guest. उनको priority तो मिलेगी. But our intention is to give her a taste of बाकी लोग भी कैसे हैं, how we have trained them, and कैसे बातें करते हैं, पाल पोस के कैसे बड़ा किया है, कैसे मेहनत से. But yeah, intention वही है कि fun करें थोड़ा. तो शुरू करते हैं. क्या ज़्यादा सोचने की बात तो है नहीं जैसा. I'll start off obviously by Basundhara. बाकी लोग chime in करना. Again, to give you guys context, हम बचपन की बात कर रहे हैं. We're talking about the kind of films we have watched growing up. We're talking about the kind of TV shows that we might have watched growing up and how maybe they have influenced us good or bad ways. And if you got a chance, how would you like to change it if we would like to, that is. And क्या क्या याद आता है जब बचपन की बात करते हैं, just all the related things around that. There's no format as such. But so Basundhara, I just want to start off by asking you, when I say the word Bachpan ka Pyaar, so like what's the first thing that comes in your head? Like obviously film ke context mein, but what's the first thing that comes in your head? So whatever the poster you made, right? It's koi mil gaya. It's right up here. Oh my God. So actually the thing is, when Sankalp shared with me the creative, so to say, he's going to put up for the post. Yeah, I actually screenshotted it and sent it to Arnab because I was so overwhelmed. Like there was my picture and Rohit Mehra on the side, and whoever follows the page or knows me personally, they know what Koi Mil Gaya means to me. And I have, I mean, people have laughed at it, and I don't mind because, you know, over the years, this movie has become like a meme content. And like comedians, I don't know if you have seen this Karunesh Talwar stand-up. Yeah.
is like totally bashing the movie, and I have laughed at it as well. But you know what is special to you in some way remains special without requiring any justification, and that movie is something like that, because you have certain memories associated with it, and it may not be the same for everybody else, but doesn't matter, right? Because what is special to you is you. Like, it was the first Hindi movie I saw in the theater with my dad. So, and then, you know, right now I am an astrophysicist, I'm a cosmologist, and it's like somehow the seed of studying space and all, even before I watched ET and any kind of sci-fi movie, that seed was sown by Koi Mil Gaya somehow. I cannot explain it. It's completely it's an illogical movie of some sort. Yeah. But when you are a child, you don't look for logic, and that's the beauty of it. It grows on you somehow, and even if you expect ki at some point you will grow out of it, like you grow up and then you're like, ये क्या बकवास मूवी है, अभी अभी ये सब बचकानी चीजें हमको नहीं देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए. But somehow it is there, and like every year I watch it at least 2 or 3 times still till now. And like my mom still says ki you know, I used to have exams in school, and उस टाइम पे ये सब नहीं होता था ना, OTT वगैरह, YouTube भी नहीं था. तो so that when the movie came I was 12, and then I kept watching it whenever it came on TV, like local cable channels होते थे ना जहाँ पे दिखाते थे. तो ऐसे अगले दिन एग्जाम हो जाता था, पढ़ाई छोड़ के वो देखने बैठ जाती थी, और मुझे सारे डायलॉग्स रटे, अभी भी रटे होते हुए हैं. मतलब it's that kind of, see, बचपन का प्यार is defined for me in that आसपास की बहुत सारी चीजें हैं, but if you like ask me what is that one thing, that would be this movie. Yeah. That's so lovely. I think a बहुत बढ़िया starting point है. But before asking everybody else what their बचपन का प्यार is, I'm pretty sure काफी लोग का कोई मिल गया भी list में शायद होगा. So I want to ask everybody what your relationship with Koi Mil Gaya has been, and like what are the moments that you remember. मतलब like as you Vasundhara mentioned about that Karunesh Talwar वाला comedy वाला जो पूरा setup था उसमें, you mentioned about the कि ये क्या बोलते हैं, कसौली क्यों गया था, उसको फूकना था और कुछ करने नहीं गया था. That made so much illogical था, but उतना ही funny भी था. Like the entire Kasoli Tigers bit as well. Like that's the part I remember the most. The bullying वो bit. कसौली इसलिए गए थे क्योंकि कसौली से सिग्नल आया था. This is pure logic. He happened to be there. I don't know what kind of, like, some of the bits in that stand-up is absolute crap, I have to say. It's not because I'm biased, but it's true. Yeah. Yeah, I mean, I agree. It's just for fun, so चल जाता है इसलिए. Adri, please, I'll just repeat the question for everybody. We're talking about अपने any favorite moments from कोई मिल गया. क्या याद आता है जब कोई मिल की बात करते हैं? Yeah, so hi Basundhara, welcome to Abstract Room. So basically ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, मेरा कोई हक नहीं है सच, but yeah, फिर भी. So okay. So basically हाँ, अगर कोई मिल गया की बात करी जाए तो I think there are two very significant things जो मुझे बहुत अच्छे याद है. One is Bonvita, because मैं तो खुद Bonvita पीता था, अभी कल रात भी मैंने पिया. This is a very new thing in Symbiosis, I think. Everyone drinks Bonvita, so वो एक is it a euphemism for something? पता नहीं क्या यार, मतलब यहाँ every other restaurant, even a South Indian restaurant give Bonvita, and I was like, wow, ये तो कुछ अलग ही तरीके का कल्चर है यहाँ पे. बट ठीक है, मतलब it was Bonvita, so you know that's the thing that I'm right now studying all these things, और मुझे उसका लॉजिक भी समझ में आता है. बट as बचपन की बात चल रही है तो you know they kind of wanted you know छोटे बच्चों को कि यार at least they can relate to something, so that रोहित का कैरेक्टर वैसे you know धीरे धीरे करके बड़ा होता है. बट देन अगेन Bonvita वो तब भी पीता है, राइट? तो जब बड़ा भी हो जाता है तो मेरे को वही लगा लाइक कि वो एक बहुत सही चीज थी मेरे लिए कनेक्ट करने के लिए. और आई थिंक कोई मिल गया का जो ट्यून था ना, वो आई थिंक डैड पता नहीं यार कोई एक कुछ तो लाए थे एक बारी घर पे. देयर वाज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें 10 ट्यून होती थी उस टाइम पे. आई थिंक इट वाज सम ट्यूनर और समथिंग, उसमें वो था. एंड आई यूज्ड टू लिसन टू दैट. तो वो ट्यून का तो मतलब एक अलग ही सीन होता था, और Bonvita से मेरा कनेक्शन था. एंड ऑल्सो बिकॉज एज Basundhara has mentioned that the theoretical experience उस टाइम पे
मतलब आज की डेट में तो आपके पास बहुत बहुत कुछ है करने के लिए, बट उस टाइम पे थिएटर का एक्सपीरियंस अपने आप में अलग होता था. एंड दिस फिल्म हैज kind of changed it for a lot of people, not even kids, but a lot of people. So I think that's what makes Koi Mil Gaya very special for all of us as well. Because I think मेरा लाइव हुआ था जब संकल्प के साथ, तो उसने पूछा था कि who is your favorite director, और दिमाग में एकदम से राकेश रोशन आया. क्यों आया? There is no science behind it. It's all because he has created certain part of that memory, certain कहीं उन्होंने वो प्लान कर दिया था that कोई मिल गया is there. So I think मेरा तो यही एक मेमोरी है उसके साथ. I think he's our Spielberg in that sense. And I mean, and obviously मैं तो पता है ये फिल्म को एज अ घर वापसी देखता हूँ. मतलब रे साहब ने बहुत सालों पहले स्टोरी लिखी थी एंड उसके बाद में फिर ईटी बना. I have heard that there's a linkage है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ. Yeah, I have also heard that. Yeah, and then ये वापस से अपने आप. I think it's a घर वापसी only, so I don't see it in a way कि यार कॉपी मार लिया. But yeah, I think I remember I used to I just remember this one thing that जब वो ट्रांसफॉर्म होने लगा था तो उसके बाद में उसने जो भी शर्ट पहनी थी, स्कूल की शर्ट पहनी थी, उसने ऐसे बाइसेप दिखाया और फट गया पूरा शर्ट. एंड मैंने पूरा बचपन ट्राई किया वो चीज. पूरा बचपन ट्राई किया, फटा, लेकिन मैंने फाड़ा इसलिए फटा. और कोई रीजन नहीं था उसके फटने के. You didn't have jadoo in your life, no. किसी ने मेरे सर पे से हाथ नहीं रखा. गौरी, प्लीज गो अहेड. ऑल्सो मैं एड ऑन करना चाहूंगी, बॉर्न वीटा के साथ साथ हाइड एंड सीक का भी काफी मेंशन है इन द फिल्म, जो कि मेरा फेवरेट बिस्किट होता था यार. कोका कोला. नहीं, मतलब मेरा फेवरेट वाज हाइड एंड सीक. तो मैं ऐसे होती थी, भाई हाइड एंड सीक तो मैं भी खाती हूँ. टीवी पे जब मैं देखती थी, तो मैंने थिएटर में नहीं देखी, मैं थोड़ी छोटी उम्र में आ जाऊंगी. मेरे को पता भी नहीं कब हुई थी रिलीज ये फिल्म. 2003 या. हाँ, तो मैं 1 साल की थी तब. तो हाँ, so that, and I think this film was probably the only film which showcased Halloween. And I was like, ये क्या चल रहा है, घड़े पे बना रहे हैं वो. And then मतलब Halloween के साथ it was really my first. Halloween नहीं था, it was like they were having a carnival Desi, because the spaceship arrived. but So they Desi were Halloween dressing up as तक था. aliens. Wasn't it Desi Halloween? Kind of. Kind Special of. occasion. चलो, दिया ये था. तुमको, दिया ये पॉइंट तुमको दिया. Thank you. सबको तो हुई नहीं है ना मूवी मेरी तरह. Yes. मतलब हाँ, मतलब एज सच पर्टिकुलर कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकती, बट लिटरली ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो रटी हुई हैं इस फिल्म के बारे में. जैसे दिस वो कोई कभी खुशी कभी गम का ही सॉन्ग है उसका, यू आर माय सोनिया, विच जॉनी लीवर एंड्स अप सिंगिंग. तो समटाइम्स इट्स लाइक व्हेन पीपल आर सिंगिंग इन अ ग्रुप यही गाना, and then there's a bunch of people including me, we don't sing न्यू नजरेना फिर तुम, we sing एड़े हो एड़े तुम. इतना ingrained है दिमाग में आगे की. तो ऐसी चीज है जो इस फिल्म में लिटरली रटा दी थी. तो मुझे मेरी ये मेमोरीज है इसके साथ. बहुत ही स्पेसिफिक. बहुत ही मैं थैंक्स. बहुत ही सही है यार, बहुत ही. Sarj, please go ahead. Also, Sarj, from you on, we'll start off to ask also not just about this film, but also like when I tell you the words Bachpan ka Pyaar, then what comes to your mind first? So you want me to talk about Koi Mil Gaya first, or yeah, first Koi Mil Gaya. just to carry from what Gauri said, like even I too was pretty young when it came out, 2003. So I think I've seen it on the DVD, so I still remember how it looks like on the DVD, Koi Mil Gaya, at my house. And I think maybe I was old, like a little more mature when maybe Krish came out. So I remember more of seeing Krish than I do about Koi Mil Gaya. Like I remember when Krish came out, there was also Munna Bhai to release in the theater. Yeah. And as a kid, you don't get to pick which movie you watch, right? It's your parents who decide. So I remember when we went out to watch a movie, I thought it was going to be Krish, but apparently we entered Munna Bhai. So I was pretty pissed then when that happened. As a kid, that was sort of heartbreaking, but
yeah, I remember many ads from Krish though. Like there was some even bandage that they released, like some partnered with some random bandage brand, and like it became a thing. I don't even remember how Krish, like Hrithik Roshan, specifically swam to cross the river or ocean. I don't know what it was, what a body, but yeah, like it was sort of like a weird Yeah, butterfly sort of thing, and like as kids we would try and replicate that in our swimming pools. Yeah, in that was fun. So Koi Mil Gaya is of course pretty special. but what about your Bachpan Ka Pyar films? Like, what are the ones that you tend to remember when I say the word Bachpan Ka Pyar? Jackie Chan for sure. I Ah, yeah, well, I'm not reacting in a nice way. This is nice to see there are other Jackie Chan fans in the house. Yeah. Like there's so many of Jackie Chan movies that like come to my mind. I think even wrote about it recently. Like there's City Hunter. There is Armor of God is a police story series. Like I used to watch them with my mom. So like of course my dad and my brother were used to be busy, and like it was just me and my mom at the house. So we have spent so many hours watching these random movies that would come on the cable. And like Jackie Chan, my mom was into action movies, action and thriller ones. So Jackie Chan used to be one. Then there was a Die Hard. Then there were, I think, Indiana Jones. There's so many different movies that we would spend our like afternoons watching together. So yeah, those are some of the first things that come to my mind. I just remember seeing Jackie Chan like do those parkour things, like maybe traverse from distance A to distance B, and like I don't know how, like pretty much like a monkey. But yeah, we would then again like sort of like Krish try and replicate the same actions in the playground and see how much we can pull it off. that's so fun. That sounds so fun, man. Anshika, please. हेलो वसुंधरा। तो यार कोई मिल गया तो मैंने ना जी सिनेमा पे देखी थी, और एंड आई वाज 5-6 years old, तो मेरे को ठीक से इतना याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर लाइक माय फेवरेट थिंग कुछ कोई मिल गया वाज जादू। तो मेरा सिर्फ जादू से कनेक्शन बैठा, और लाइक अभी रिसेंटली किसी ने बोला दैट आई टॉक लाइक जादू। What? जादू जादू टॉक। पता नहीं कैसे, और मेरे पास वीडियो भी है। अंशिका धूप बोल के दिखाओ। धूप। That's more like मुझे drugs दो। That's not. तो यार मेरी कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है फिल्म के साथ, लाइक तुम्हारा बचपन का प्यार बताओ। शाहरुख। Yeah. Shahrukh, any Shahrukh movie. The first movie I watched in theater was Devdas, and I'm still obsessed with that film. मतलब अभी मैं उसका मजाक बनाती रहती हूँ, but yeah, because that movie traumatized me, like literally traumatized me. मैं थिएटर में रो रही हूँ, 4 साल की 5 साल की रो रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मर गया। आदमी मर गया है। And then थोड़े टाइम के बाद लाइक दैट इज माय फेवरेट मेमोरी फ्रॉम माय चाइल्डहुड, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ये वाला सॉन्ग आया, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, एंड मेरे कजिन मेरे को ऐसे रूम से बुला रहे कि देखो देव पारो नाच रहे। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं ये तो जिंदा हो गया। सो लाइक माय बचपन का प्यार शाहरुख। आई हैव वॉच्ड ऑल लाइक ऑलमोस्ट ऑल हिज फिल्म्स ग्रोइंग अप, लाइक सारी की सारी। इवन कभी अलविदा ना कहना, आई हैड लाइक वो सॉन्ग का कैसेट आता था, वो था, डीवीडीज था, सब कुछ था। एंड मेरे को याद है मैं रफ कॉपीज या कुछ भी ऐसे लेती भी थी ना, तो उसमें शाहरुख का ही पिक्चर होता था हमेशा, वो सिलेक्ट करके लेती थी मैं। लाइक शाहरुख बेसिकली माय बचपन का प्यार। काफी लोग कर रहा होगा यहाँ पे, but you know it's so interesting that Shahrukh as a bachpan will mean very different to you and me who are the 200s wala kids, and it would mean very different to people like Arnab, Basundhara. I'm not, मतलब मैं ageism की बात नहीं कर रहा इधर, but genuinely it's a different Shahrukh. It's fact. हमारा NRI शाहरुख था, आपका थोड़ा अलग शाहरुख था उस सेंस में। it was a more chocolate boy शाहरुख। हमारा बाजीगर वाला शाहरुख था, हमारा 70 मिनट शाहरुख था। बट जो भी शाहरुख था ना, लाइक मैंने तो सब देखा है यार, डर, बाजीगर, सब कुछ, एंड आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद ऑल दोस फिल्म्स, स्पेशली वेयर शाहरुख प्लेड द नेगेटिव कैरेक्टर्स। मेरे को बहुत मजा आता है, लाइक बहुत ज्यादा।
बता नहीं सकती. I agree. You know, No, let's for go to me Shakti. also, yeah, just because you're talking about Shahrukh, तो मेरे लिए भी it was for me बचपन में it was his early 2000s movies only, you know, like Kal Ho Na Ho, Veer Zara, Swades, all those things. Like his 90s movies now I'm watching. Yeah. तो DDLJ मैंने 3 साल पहले पहली बार देखी. ठीक है. DDLJ, दिल से, इवन बादशाह, बाजीगर, अंजाम, डर, ये सब मैंने बहुत रिसेंटली देखी अभी है. अलविदा ना कहना. हाँ वो भी. Your हालांकि that's a 2000s movie, but I'm saying 90s वाले. Oh, गहराई का prequel. Much better one though. Correct. But you know, yeah, I mean, like the only reason I was mentioning that was also because it would have been so interesting to see the Shah Rukh of 1991, 1992 at that time. You know, I would love to know if people at that time remember watching a film जब उसी time पे आई. Like in retrospect, I have also obviously watched a lot. Karan Arjun मेरी favorite film है. I have watched it so many times, but I have watched it बहुत time बाद में ना. My point is कि अब तो चलो हमने retrospect में देख रहे हैं इस चीज को. ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे who have sort of watched his film when it came out, like example DDLJ Yeah. or others. हाँ, like देवदास सेकंड फिल्म में काफी गैप आ गया, बट कल हो ना हो और ये सब मैंने थिएटर में ही देखी. एंड इनफैक्ट लाइक रईस, लाइक आई वॉच ऑल शाहरुख फिल्म्स लाइक इन थिएटर ओनली. बहुत आई डोंट शो इट ऑफ बिकॉज शाहरुख इज लाइक, मेरे को लगता है कि अब सबका ही एक फैन बेस है, सबको पसंद तो है ही, तो उसको इतना हाइप करने का जरूरत नहीं है, तो मैं विजय बर्दाश्त करती हूँ. बट शाहरुख के साथ तो यार डिफरेंट मेमोरी. आई यूज्ड टू राइट लेटर्स, आई स्टिल हैव दोस डायरीज जिसमें मैंने डियर शाहरुख करके लेटर्स लिखे हैं कि लाइक जिंदगी का कोई परेशानी, प्रॉब्लम की मतलब इससे सोल्यूशन मांगूंगी तो मिलेगा. लाइक इसने दारू से भी डील किया हुआ है, इसने इतने सारे, कैंसर भी हो ही गया था इसको, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से तो मम्मी डांट रही है, तो इसका सोल्यूशन तो बताएगा कि क्या करने का है मेरे को. So like all that kind of. That's so funny. Shakti, please. Hey everybody, hello. काफी टाइम के बाद लोगों को देख रहा हूँ. मेरा बचपन का एक्सपीरियंस जो है तो दो है. फिल्म्स के मामले में आई विल से ऑल दोज फुल ऑन एक्शन मूवीज, राइट फ्रॉम घायल देख लो, you know, त्रिदेव देख लो, विश्वात्मा देख लो, and then yes, and then इंग्लिश में देखो तो वैन डेम कपूर जितने भी आप, you know, डबल ट्रबल देख लो, जैकी चैन मूवीज देख लीजिए, Die Hard movies, anything that came on television at that point of time, visual action movies only, I would watch. That is how that was my go-to. The only memory of Koi Mil Gaya I have is when because Koi Mil Gaya came when we were in college, kind of a thing. So ET ka itna, I had seen ET pehle, right? So then Koi Mil Gaya came and he started showing the spaceship for मैंने क्योंकि Independence Day देखा था, तो I like ये क्या बकवास spaceship है, kind of a thing, right? What is this? ये इससे तो अच्छा वो Independence Day जो काफी टाइम पहले आ गया था उसमें था यार. What are we doing? So and the only thing that I remember, because हम लोग बहुत यूज करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे तो धूप नहीं होती थी ना, तो हम लोग धूप करके, that's the only memory I have. कोई नहीं, I never saw the movie in one go. I've seen in bits and parts. पूरी one on one नहीं. क्रिश देखी है सरप्राइजिंग मैंने, बट कोई मिल गया नहीं देख पाया. So that's my memory of बचपन का प्यार. और अगर एक्चुअल लव देखो, थिंग्स आई यूज्ड टू वेट फॉर वाज डिज्नी आर करके एक शो आता था सोनी पे 5 बजे. मेरे बचपन में 1 घंटा डिज्नी के प्रोग्राम्स आते थे ऑन अ नॉर्मल डे, और वेकेशन के टाइम पे लोकल केबल ऑपरेटर फन टाइम करके 2 घंटे में अप्रैल और मई में कार्टून चलाता था. उसमें ही मैन, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, स्वॉट कैट्स, मतलब काफी कुछ आता था. स्वॉट कैट्स नहीं, बट टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आता था, ही मैन आता था, लॉरेन हार्डी आता था, थ्री स्टूजेस आता था. सो दैट वाज काइंड ऑफ आई यूज्ड टू वेट फॉर. Yeah, these things I was. That's my memory of my बचपन का प्यार. मुझे तो That's दुख होता है कि आजकल के बच्चे कार्टून के नाम पे क्या कुछ नहीं. अरे मैं Not कल just, ही I've also mentioned a few times that even children's films don't get made. You know,
there's nothing in the name of children stuff. You have this Peppa Pig and pata nahi kya ye Netflix pe Yeah, everything. I was recently watching Dada Dadi Ki Kahani. I found that on YouTube, so I started watching that. मतलब suddenly I thought, अरे ये भी है करके इसको. क्या है वो exactly? Is it a show or something? It's a show. Dada Dadi was Ashok Kumar or I forgot the lady name. वो दोनों आते थे. They were grandparents. Every time they would tell a story to their kids, and then you know they have a moral behind the story. Vikram Vital कैसा था? Like there would be a story और उसका moral था kind of thing. उसी लेग में लेकिन यहाँ पे दादा दादी so they didn't want to scare kids so they created a दादा दादी की कहानी. So something, yeah. Nice. Who's the Vikram? Who's the Betal in that? Arun Goel, na? Arun Goel was the Vikram in that. Vikram Achha, Aditya. okay. And Vetal was Lilliput, I think. No, अच्छा Lilliput नहीं था, कोई और था. कोई और था. Arnab, please go ahead. Sorry, there are a lot of raised hands. My bad. Yes, Arnab. So it's very difficult to formally do this, but abstract আপনাকে স্বাগত বসুন্ধরা. धन्यवाद. Yeah. Okay. Quickly coming to कोई मिल गया. मुझे ना वो पूरा डायलॉग भी याद नहीं, but the way रोहित says that हम लोग ये करेंगे सुबह शाम पॉटविटा पियेंगे. मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है. मतलब somehow out of the entire film बस वो डायलॉग पे जब आता है ना ऐसा लगता है गिगलिंग वाली हंसी आती है एकदम अंदर से. तो कोई मिल गया का मेमोरी अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है. Just binging on that. बचपन के प्यार इन फॉर्मेट ऑफ मूवीज मेरे पास 4 सेगमेंट है. इट विल स्टार्ट विद द हिंदी में अगर हो तो माय मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ माय बचपन वाज विद द कल्ट कॉमेडीज. गोलमाल, चुपके चुपके, ये दोनों मैंने अनकाउंटेबल टाइम्स देखे हैं एंड अभी भी बहुत फेवरेट है. इंग्लिश में हम जेनजी वालों के लिए गोलमाल कुछ और होता है. नहीं, मेरा अमोल पालेकर मेरा गोलमाल इज अमोल पालेकर. both like ऋषिकेश मुखर्जी films. And English में I like Home Alone series part 1 and 2 and Charlie Chaplin. Die Hard बचपन, मतलब रिपीट, ये सब मूवीज में रिपीट पे देखा हूँ. चार्ली चैपलिन उस टाइम पे शायद मतलब वो मैच्योरिटी नहीं चार्ली चैपलिन समझ लेगी, बट द कॉमेडी फ्लोड थ्रू ना. चार्ली चैपलिन, लॉयल एंड हार्डी आल्सो. लॉयल एंड हार्डी बहुत कम लोग देखते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट लॉयल एंड हार्डी मैंने Oh, those were super funny. हाँ, बहुत अच्छा लगता था ना. और मेरे पास ये थे. हाँ, वो छोटी सी बात शक्ति है जो आप बता रहे, जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह. हाँ, उसी का पार्ट है ना, मतलब दैट सीरीज. हाँ. And the other one would be my Bengali ones. All 4 Ray movies actually. The 2 Feluda movies, Shonar Kelle and Joyba Felunath, and the 2 Gupiken Bhagavain and Hirok Rajat Deshe. Hirok Rajat Deshe, because it was a limerick, I almost knew the movie. Like I knew the entire movie by heart. मतलब I could. एक point ऐसा था, I was out for a surgery there in my hospital, and मैं लोगों को वो रिसाइट करता रहता था, लाइक आजू-बाजू के लोग ऐसे सुनते थे, they used to get amused by that. I still have that memory in my mind. मतलब हीरो राजा जैसे अभी भी आई कैन, इफ वी जस्ट सिट विद, मैं 2-3 पेज तो ऐसे बोल सकता हूँ अभी भी, इतना याद. तो बचपन की मूवीज ये थे. शाहरुख वारुख वाज देयर. शाहरुख वाज ऑलवेज माय फेवरेट एंड ऑल, बट इफ यू टॉक लाइक रियली बचपन की मूवीज जो लाइक वी वर लाइक लीगली अलाउड टू वॉच एज किड्स एंड एवरीथिंग, जिसमें वो उस टाइम के लव रोमांस चीजें नहीं है, तो प्लीज फाउंड द मेजॉरिटी. That's so nice. We'll cover everybody up and then I'll bring a different point to talk about. Shruti, please go ahead. You said Shruti, right? Yeah. Sorry, मेरे उसमें कुछ. हाँ. Yeah. So बचपन का प्यार. Okay, first कोई मिल गया was one of my favorite movies in my childhood as well. मैंने बहुत बार देखी है. जब भी उस टाइम तो ऐसा वो नहीं रहता था that we can watch this movie anytime we want. So जब भी किसी चैनल पे आया and I found it कि कोई मिल गया चल रहा है, I never changed the channel. Every time I finished. तो ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद थी. इन पर्टिकुलर अभी काफी टाइम से देखा नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर, बट मुझे उसका वो गाना बहुत पसंद था. इधर चला मैं उधर चला. जब भी वो आता था ना, तो आई यूज्ड टू सी किसी भी चैनल पे, जैसे गाने के पर्टिकुलर चैनल लिमिटेड होते थे, जहां भी मुझे मिलता था, मुझे वो गाना बहुत पसंद था. रिपीटेड बहुत देखा है मैंने बचपन में. एंड सो कोई मिल गया के साथ इस वक्त. एंड मैं सोचता था हमेशा कि यार उसके वो जूते कहाँ मिलेंगे ऐसे वाले, चिपक जाते हैं ऐसे.
और मेरे बचपन का प्यार में आई विल से 3 आई हैव, लाइक 2 आर रिलेटेड बट वी कैन समराइज इट टू 2. सो वन वाज शाहरुख खान एंड कुछ कुछ होता है. मैंने लाइक आई वाज क्रेजी अबाउट शाहरुख खान बचपन में. मैं उसकी कोई भी मूवी, जैसे घर में चल रहा हो कोई चैनल एंड रिमोट मेरे हाथ में हो एंड समहाउ आई फाउंड कि कोई मूवी चल रही है शाहरुख की, मेरे भाई मतलब भाई बहन लोग लाइक अब तो चैनल चेंज नहीं होने वाला है, चलो यहाँ से. बिकॉज शाहरुख की मूवी तो एंड हो गई. आई वोंट लेट एनीवन चेंज द चैनल. और कुछ कुछ होता है मैंने बहुत, मतलब मुझे काउंट याद नहीं है मैंने कितनी बार देखा है, अभी भी देखती हूँ. कि वो प्यार दोस्ती है एंड ऑल, उस टाइम में अभी बहुत वो लगता है. बट दैट टाइम दैट मूवी एवरीथिंग मुझे सब याद था उस मूवी का, अभी भी याद है. बट दैट वाज लाइक, और शाहरुख मुझे अभी भी अच्छा लगता है. एंड उसके लिए आई यूज्ड टू फॉलो हिम अलॉट. उसके इंटरव्यूज, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड अवार्ड फंक्शन में जो होस्ट इनिशियली, अब तो नहीं देखती है बट उस टाइम जब आता था तो द वे ही यूज्ड टू होस्ट एंड फनी, और वो उस टाइम बहुत अच्छा लगता था. इवन हिज पर्सनल लाइफ, एक मैगजीन आती थी जिंदगी, somehow my cousins or someone bought it my home, उसमें उसकी पूरी लाइफ, उसकी शादी एंड ऑल दिया हुआ था. एंड आई यूज्ड टू रीड अलॉट का, मतलब मल्टीपल टाइम्स पढ़ती थी मैं उसके इंटरव्यूज कहीं भी न्यूज़पेपर में ढूंढ ढूंढ के. सो शाहरुख का लाइक ऐसे अंधा प्यार था मेरा बचपन में. एंड अनदर वन वाज हैरी पॉटर. तो मैंने लाइक अभी भी है, इनफैक्ट अभी भी रिसेंटली हमने और अर्नब ने भी सॉ इट ऑन अ ग्रुप ऐसे पार्टी वॉच किया था जब उसका रीयूनियन आया था. एंड उसके पहले लाइक दैट मूवी इज, क्या बताऊं, आई एम नॉट फाइंडिंग द वर्ड. बहुत देखी है. एंड फर्स्ट टाइम हॉल में मैंने उसका लास्ट पार्ट 8th का 7th का सेकंड आया था, दैट आई सॉ फर्स्ट टाइम इन हॉल, हैरी पॉटर सीरीज का. So that was again a different feeling. And yeah, that's it. That's so lovely. That's so lovely. Thanks for sharing that. Harsh, please go ahead. Yeah. So first of all, I'll say about Koi Mil Gaya. So as like Shruti said, Mera bhi actually the only memory, like the first thing that comes to mind is that song, and also Pretty Zinta. She was really pretty in that movie. So Very yeah. So yeah. So that's about Koi Mil Gaya. वो song उसमें ना वो जो अलका याग्निक का वो लाइन आती है ना कि मैं तेरे संग हो चली, ऐसा करके वो लाइक द एंटायर द ट्यून ऑफ द सॉन्ग इज लाइक आई थिंक सो एडिक्टिव, एटलीस्ट टू मी आई थिंक. या सो अबाउट माय बचपन, सो मेरा थोड़ा अलग एक्चुअली, आई डोंट नो, बाकी लोगों से काफी अलग रहा है. मैंने इंग्लिश मूवीज बहुत लाइक देखी ही नहीं है. मैं अपनी मम्मी के साथ मूवीज देखता था. तो मेरी मम्मी देखती थी दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, ये सब मूवीज. तो मैंने ऐसी मूवीज ज्यादा देखी है, and इसलिए मेरे मेरे शायद वन ऑफ द फेवरेट में से डेली सोप भी है एक, आई विल टॉक अबाउट दैट. सो बट माय फॉर मी पर्सनली आई द वन पर्सन लाइक वन एक्टर आई लव्ड द मोस्ट इन माय चाइल्डहुड वाज ऋतिक रोशन. तो ऋतिक रोशन का लाइक आई वाज लाइक डाई हार्ड फैन. ठीक है, तो कहो ना प्यारे आ गई तो मैं बैठ गया हूँ. ठीक है, फिर वो कभी खुशी कभी गम में जैसे वो कार खोलता है ना ऐसे, उसका तो भाई मैं इतना खतरनाक फैन था उस सीन का कि यार ऐसे कार खुलती है, शिट. कार के फैन थे या ऋतिक के फैन थे? I'm कार coming तो to that. मिल जाएगी. Coming to that. So actually, I was a fan of cars also, and that's where Tarzan is also one of my favorite movies. Like वो होता है ना guilty pleasures. Oh my God, what a film! What a film, bro. Yeah. So exactly. So ये car and Hrithik were like two of my like ऐसे favorite things in childhood. So ये सब मूवीज बहुत देखता था मैं. ऐसे कौन ना प्यार है मैंने लिख रखा था एक्चुअली, कौन ना प्यार है धूम, ये सब. नाउ द मूवी, सो आई डोंट फॉरगेट दैट. आल्सो सम मूवीज व्हिच आई पर्सनली लाइक, ऐसे होते हैं ना जब बचपन में बहुत ज्यादा थिएटर में नहीं जाते देखने के लिए. एटलीस्ट मैं जब आई यूज्ड टू लिव इन विलेज, तो वहां पे इतना थिएटर्स का वो नहीं था, तो मैं सिटी पे आते थे देखने के लिए. तो देयर बी वेरी फ्यू मूवीज व्हिच आई वॉच्ड इन थिएटर, राइट. तो दे स्टे विथ यू. सो लाइक आई रिमेंबर 2004 में 3 मूवीज एक साथ देख ली थी मैंने. तो उस वक्त मस्ती आई थी और एक मूवी थी जिसका नाम भी एम से ही था, एंड देन मैं हूं ना थी. तो मैं हूं ना का भी मैं इतना फैन हो गया था. लाइक वो स्लाइड करता है ना जो वो घुटनों पे, मोहब्बत नीज है पे. क्या? मोहब्बत है? मोहब्बतें नहीं, मोहब्बत वाज इन 2000. नहीं मोहब्बतें नहीं थी. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. हम तुम मर्डर था आई गेस, मर्डर था आई गेस. तुम बचपन में मस्ती मर्डर ये सब देख रहे हो, क्या कर? मर्डर वाज एक्चुअली बहुत पहुंचा मिस्टेक. हुआ इंसान है भाई.
मर्डर तो वाज मुझे अ इसलिए वो मिस्टेक। याद है कि इस एक साल में 3 मूवीज देख ली थी मैंने एक साथ थिएटर में। तो मैं हूं ना वाज लाइक उसमें वो जो स्टंट आता है ना, वो उसमें नीज पे वो करता है स्लाइड, तो मैं चांद घर पे मेरा दिल। गोरी गोरी वाला सॉन्ग पे जो स्टार्टिंग अच्छा, में गोरी स्लाइड कर। गोरी में, ओके ओके, हाँ। हाँ। तो मैं घर पे, हमारा हॉल थोड़ा लंबा हुआ करता था, तो मैं से हॉल में स्लाइड मार रहा हूँ आके, ये सब कर रहा हूँ। फिर वो, सो आई वाज लाइक फैन ऑफ दैट मूवी। तो लकीली शाहरुख खान के मैंने बहुत सारे मूवीज देखे हैं ऐसे, ये मैं ना देखा है, ओम शांति ओम देखा है, जब तक है जान, आई वॉच्ड ऑल ऑफ दिस इन थिएटर। सो या, एंड टू मोर थिंग्स, एक डेली सॉप, तो इफ यू गाइस हैव वॉच्ड तेरे लिए, आई वाज लाइक ह्यूज फैन हाँ, ऑफ दैट। मैं बताती हूँ, क्या नाम था लड़की का? तानी, 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 अनुरागन तानी। या, अनुराग, हाँ। तो मुझे उसका टाइटल टाइटल सॉन्ग कैलाश सॉन्ग खेर बहुत ने गाया है। पसंद है। ओके, सॉरी क्या क्या श्रुति। श्रुति? सेम सेम जो उसने हर्ष ने अभी बोला, उसका ये टाइटल सीरियल ट्रैक बहुत मुझे बहुत फेमस है। पसंद था, मैं रिपीट पे सुनती थी उसको। तेरे लिए का टाइटल, इट्स हाँ, अमेजिंग टाइटल सॉन्ग है, कैलाश खेर ने गाया है। सो आई यूज्ड टू लिसन इट लाइक ऐसे लूप पे वो, ठीक है ये। एंड कार्टून में से ड्रैगन टेल्स, आई लव ड्रैगन टेल्स, सो दैट्स माय चाइल्डहुड। That's amazing. Because you have mentioned this, we'll quickly take Shafali's and Shubham's point, and then we'll move to more specific things, like specific daily soaps या फिर specific animated films क्या देखी है ऐसे करके. Shafali, please. या हाय वसुंधरा। हेलो। तो हेलो हाय। कोई मिल गया के बारे में कुछ ऐसी खास मेरी मेमोरीज नहीं है। पहली जरूरी बात नहीं है सब हाँ तो। तुम लोग हाँ, बट बहुत शुरुआत वहां वो से की है। सवाल तो वो सवाल बट तो कल पूछा था मैंने, अब तो आगे बढ़ गए उससे. हाँ, बट स्टिल, अरे कोई मिल गया क्या, एक वो कह सकते हैं कि वो जो इनोसेंस ऑफ लव था, दैट वाज वेरी क्यूट बिटवीन रोहित एंड प्रीति जिंटा's कैरेक्टर। बट मेरे बचपन का प्यार अगर कहा जाए तो इट स्टार्टेड फ्रॉम कुछ कुछ होता है, एंड इट वाज नॉट अबाउट शाहरुख खान, इट वाज अबाउट दैट किड अंजलि, बिकॉज वो उसकी एज और मेरी एज सेम थी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, एकदम खुद के वीडियोस ले रही है और व्लॉग्स बना रही है, एंड शी हैड I दिस have a question because you were also 8 that time. You're saying same age. Do you या think whatever she was doing as an 8-year-old was या इट logical? वाज वेरी कूल। जैसे समर उसके कैंप कंधे होता पे है, इतना responsibility डाल दिया उसके मरी हुई मम्मी। नहीं, that was secondary, but she had this backpack, ऐसे stuffed toy के जैसे Dora backpack the था। Explorer. Tweety. Yeah, Yeah. and I wanted that, तो वो तब बहुत expensive हुआ करता था, but still my parents bought it। और उसमें कुछ भी नहीं बैठता था, लाइक स्कूल में लेके भी नहीं जा सकते, कोई किताबें नहीं बैठती, इतनी छोटी सी वो बैग, बट आई यूज्ड टू कैरी इट ऑन Style. सैटरडे को एटलीस्ट बुक्स उसमें ठूस ठूस के यूज करके लेके जा सकते। एंड शी यूज्ड टू वेयर दिस हेयर बैंड, और उसका हेयर स्टाइल जो था, तो आई इंसिस्टेड माय मॉम की मुझे इस तरह का ही हेयर स्टाइल चाहिए, अंजलि जैसा। सो द किड अंजलि वाज बचपन का प्यार। अगर इंग्लिश मूवीज की बात करें तो तब पहले स्टार मूवीज पे बहुत मूवीज आती थी, सो टर्मिनेटर 2 वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज दैट वी Good वॉच्ड one. ओवर एंड ओवर अगेन। इंग्लिश आती भी नहीं थी उतनी, एंड वी यूज्ड टू स्टडी इन उसमें कॉन्वेंट ज्यादा बोल में। भी नहीं रहा है वैसे भी वो, कोई बात नहीं. हाँ, बट स्टिल नहीं खुद समझ को में नहीं आती आता थी था उसको. वो टर्मिनेटर 2 का, कुछ समझ में नहीं आता था, बट आई लव दैट, आई स्टिल लव दैट मूवी। Yeah. कि मर्क्यूरी मैन है और फिर से वो यानी उसको कितना भी गोला मारा तो भी आप वो ठीक हो जाता है, दैट वाज लाइक, जो तब के वीएफएक्स है वो बहुत स्पेशल थे। से टॉकिंग अबाउट कार्टून्स, आई थिंक सो ऑल कार्टून नेटवर्क, कैप्टन प्लैनेट, कैप्टन प्लैनेट, आई डोंट नो किसी ने देखा होगा तो। जेंजी वालों को नहीं पता है. Captain हाँ, ये Planet was 90s this का है, बहुत 90s का है। environmentally conscious. So they used to show कि how can you save the environment. तो सबके पास Exactly. अलग-अलग super powers होते थे. Oh, like Yeah. flying jet. Like flying jet. Hey, फ्लाइंग dude. दैट तो नहीं देखी, नहीं, बट कैप्टन प्लैनेट वाज वेरी गुड अब तुम एक्चुअली। बोलोगे कि ये रोबोट 2 में अक्षय कुमार क्या कुछ भी. हाँ मतलब हमें तो वही रेफरेंस देने पड़ेंगे. नहीं, बट वरना कैप्टन एकदम. प्लैनेट में ना दिस 5 किड्स ऐसे थे, और उनके पास में एक एक रिंग्स थी, लाइक अर्थ, फायर एंड Elements. वाटर, या ऐसे 5 सब पावर्स थी। YouTube पे एंड देखो जाके तुम लोग, ठीक है, हम लिस्ट बना के दे देंगे. कैप्टन प्लैनेट, ही प्लैनेट इज द इज हीरो, द ऐसे करके गाना हीरो, था. हाँ वही गाना था।
So I loved it. That's amazing. That's Yeah. amazing. Shubham, please go ahead. Hi हाँ, everyone. Power Rangers हमारे पास मतलब. So yeah, बचपन का प्यार. Talking from first, शाहरुख, प्रीति जिंटा, लिरिल एड देख के मैं Right. मतलब मेरे आज तक है मतलब डिम्पल एंड कर्ली हेयर्स. आई एम लाइक halfway on my knees. Then एमा वॉटसन है. उसके बाद देन कियानू रीव्स. ठीक है. तो मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ. बचपन से काफी हॉस्टल में ही रहा हूँ. तो मैं जैसे बाहर निकल मतलब 10th के बाद मैं थिएटर गया मूवी देखने. बचपन में ले जाते थे जुरासिक पार्क वगैरह, पर इतनी मेमोरीज नहीं है. तो 10th के बाद फर्स्ट टाइम थिएटर गया था मैं ऐसे मतलब होश में ऐसे अच्छा से देखने. तो ऑब्वियसली शाहरुख की 2005 से 4-5 से पहले जितनी मूवी थी वो कोई भी थिएटर में नहीं देखा. तो फर्स्ट शाहरुख की जो मूवी मैंने थिएटर में देखी वो मैं हूं ना था. और उसके बाद मैंने कोई भी शाहरुख की मूवी थिएटर में नहीं मिस किया है. इनफैक्ट कियानू रीव्स की भी कोई मूवी फिर मिस नहीं किया थिएटर में अगर लगी हो तो ऐसा ही हुआ था. एंड व्हेन मैं हूं ना में मैंने वो वाला सीन देखा. मैट्रिक्स में पहले ही देख चुका था स्कूल में लाइब्रेरी में टीवी में दिखाते थे हमें. तो और जब मैं हूं ना में वो मैट्रिक्स वाला स्टंट सीन है तो मेरे दिमाग में तो अलग मतलब ऐसा मेटावर्स चला था. वाओ, माय टू ऑफ माय फेवरेट्स ऐसे सेम स्टंट कर रहे हैं. ठीक है. एंड हाँ फिर प्रीति जिंटा का पता नहीं मतलब प्रीति जिंटा ऑलवेज रिमेन वन ऑफ माय फेवरेट इवन दो मतलब. देन प्रीति जिंटा एंड शाहरुख केम टुगेदर जब वो मणिरत्नम वाली मूवी दिल से मैं ना तो टीवी पे देखा था. बट दैट रिमेन्ड माय वन ऑफ माय फेवरेट. एंड देन टॉकिंग अबाउट ऋतिक का मतलब डेब्यू यार मतलब कहो ना प्यार, आई वाज ब्लोन अवे. आई मीन मतलब सितारों की महफिल तो मतलब मैं nth टाइम रिपीट पे देखा हूँ मतलब वो सॉन्ग. और वो जब वो जो बीट आता है ना जो ऐसे वो करता मतलब मैं कितनी The बार best thing about that song is you feel like it's ended, but ना वो या end नहीं होता है. उसके बाद भी मतलब are you with me? Can you feel it करके वो continue मतलब होता है. That's the best thing about the song. फर्स्ट टाइम देखा उसके बाद सेकंड टाइम तो आर यू विथ मी आर यू, उसके बाद तो वहीं पर से Totally with you. आने लगे. तू जो बोल रहा है. It was so good. But yeah, I mean, and then while I was in school, I remember ये मोहब्बतें एंड मिशन कश्मीर released same time. ठीक है. तो एकदम वो वाला था पूरा क्लैश कि हाँ शाहरुख को रिप्लेस करेगा ऋतिक एंड ऑल, वैसा पूरा गॉसिप चल रहा था अराउंड. एंड बाय दैट टाइम आई वाज लाइक डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख. मैं काफी कुछ सीखा हूँ शाहरुख से. मतलब अभी किसी ने बोला था ना वो बहुत विटी है. उसके नॉर्मल आउट ऑफ द मूवीज भी His interviews are so much fun. टॉक्स भी देखने को Brilliant. मजा आ जाता है. आई मीन Brilliant. वन ऑफ माई मतलब अगर मेरे मेमोरी में हिस्ट्री में अगर मेमोरी में कोई वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड होस्टिंग अगर मैंने देखा है तो वो सैफ और शाहरुख ने जो किया था उसने मचा दिया था. मतलब बेस्ट. बट ये जो राइवलरी ऐसे क्रिएट कर रहे थे ना ऐसे तो ऋतिक रिप्लेस करेगा एंड ऑल. तो आई वाज उस समय मैं शाहरुख का ही फैन था. एंड सरप्राइजिंगली ऐसे मोहब्बतें हिट हो गई. एंड वो ना क्लास का भी नहीं ऐसे दो गैंग बट गया था. अच्छा आधे ऋतिक के फैन ऐसे शाहरुख के फैन. एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाँ ठीक है मोहब्बतें तो बिजनेस कर ली. मतलब उतना मतलब मिशन कश्मीर एंड कंपैरिजन विद मोहब्बतें नहीं चली थी. बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि यार मिशन कश्मीर भी तो अच्छी मूवी है यार जब अच्छे से ढंग से देखा है ऐसे. तो मतलब दिस इज ऑल समराइज. एंड एमा वॉटसन तो यार मतलब पढ़ रहा था मैं फिर बड़े होके मूवी देखा तो मतलब एकदम वो सेम एज वाला वहां पे फील होता था. एंड टोटली That's so lovely यार. कितना मस्त लग रहा है मेरे को ये सब सुन के. Even though a lot of these experiences are not mine, मतलब in the sense that काफी कुछ मेरा वैसे नहीं है. But like it's just so nice to listen to all of this. You know, एक काम करते हैं. Let's shoot out some answers. I'll just put out these random rapid fire sort of cues. ठीक है. और आप बताना उसमें आप लोग की कौन सी फिल्म पहले ध्यान में आती है आपको जब मैं ये वर्ड्स यूज करता हूँ. Yeah, is it for me? For everybody, we'll start with you and we'll move to everybody then. ठीक है. So, what was the first 3D film you remember watching? Life of Pi. Life of Pi. What about the others? आप लोग की पहली 3D film में कौन सी है? Ice Age. लाइफ ऑफ पाई. मतलब हॉल में प्रॉपर 3D ग्लासेस के साथ and all, right? हाँ घर पे कहाँ 3D अवतार. नहीं मतलब पता नहीं. वो भी इतना होता है बढ़िया ना थोड़ा साइंस म्यूजियम में चले जाओ वहां पे ऐसे चूहे भाग के आते हैं चेहरे पे. वो सब काउंट नहीं कर रही. वो सब तो बहुत पहले हो गया. स्टार्स वाला थीम तो
प्लैनेटोरियम में देख लिया है वो 3D एक्सपीरियंस में काउंटिंग दैट्स प्रॉपर 3D मूवी या लाइफ ऑफ पाई यार तो लाइफ जो ऑफ भी पाई आपको में IMDb में मिलेगा, जो भी IMDb में मिलेगा वही काउंट करेंगे। अवतार नहीं, लाइफ ऑफ पाई, मेरा भी लाइफ ऑफ पाई आता था मुझे मन ये में। वो सीन है ना जब वो नीचे देखता है और पानी में और फिर वो Yeah. वेल मतलब पूरा हाँ, Oh my वो God, दिखती है और that's वेल oh my मैं तो God. ऐसे हो गई थी मेरे को ये क्या हो रहा है और ये और इवन स्टार्ट का when मतलब इट वाज माय फर्स्ट 3D एक्सपीरियंस और मैं तो वैसी बच्ची थी तब तो और मैं देख रही हूँ ऐसे पंछी आ रहे हैं क्योंकि वो स्टार्ट ही वैसे होता है ना जू के उससे तो मैं ऐसी थी अभी मैंने ब्रह्मास्त्र हाँ का यार 3D का टिकट ले लिया है। ले लिया 350-400 रुपए का, मैं तो ले ही नहीं आप पाया अभी तो तक। 4D IMAX में नहीं, देखो मुझे मिल गया 250 रुपए मॉर्निंग शो। लेकिन अच्छा, आई रिमेम्बर माय फर्स्ट 3D फिल्म वाज स्पाई किड्स, फोर्थ पार्ट ऑफ स्पाई किड्स, गेम ओवर नाम था स्पाई 4D किड्स शो उसका। 4D हाँ हाँ 4D भाई, बहुत मजा आया था मेरे को फिल्म देख के। आई वॉच दैट एंड द अदर वन वाज द एडवेंचर्स ऑफ शार्क बॉय एंड लावा गर्ल। लावागल अरे हाँ, या ऐसा या कुछ था, मैंने नाम सुना है। उसमें ये ट्वाइलाइट वाला बंदा था ना एग्जैक्टली, वुल्फ होता है यंग, या वही उसका चेहरा भी मतलब ऐसा है कि यू मेक हिम इनटू एनी एनिमल विद अ नाइस जॉ लाइन, फिट बैठ जाता है वो। दैट्स कूल very video Yeah. game-ish, but it's still for a guy, for somebody who likes that kind of movies, it's fun. Spy Kids के उसमें range में ही है वो। I know. And okay, Basundhara, what was the, okay, now we're getting a little scandalous here. What was the first time you watched a kiss in a film? टाइटैनिक। And like, what was the context? What was the physical context around you? Family के साथ में थे या टाइटैनिक, कैसे था? I was 6 or 7. I went to watch with my parents, right? तो वो टाइटैनिक सबको इतना क्रेज चढ़ा हुआ था कि एकदम हाउसफुल जा रहा है, टिकट नहीं मिलेगा, इतना लंबा लंबा लाइन लगा के फ्रेंच मतलब I don't think he's talking about a peck on the cheek. Getting more specific. No, I'm saying because it's like on shows like I Dream of Genie and all that. फ्लाइंग would किस peck- की बात तो बिल्कुल peck हाँ, would be the तो cigarette. No, not. yeah, so टाइटैनिक तो my पेरेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम पे, चलो जहां ले जाएंगे चले जाएंगे। तो द होल मूवी वाज वेरी वेरी लाइक epic, right? You know how it is to watch Titanic on the big screen. Even if you don't know, you can imagine. ठीक है, तो वो सब ठीक है, but scenes were like there was much more than just a kiss in Titanic. So that time इतना सेंसर भी नहीं होता था, कुछ सब कुछ था, हाँ कुछ सेंसर्ड नहीं था। एंड देन तो obviously that time I didn't realize, but later on when I grew up I was like हाँ था, मतलब फिर टीवी पे बाद में देखा तो मुझे लगा हाँ मैं बैठ के दो साइड में पेरेंट्स बैठे हुए। अभी that time you can be okay with it, but अभी क्या है, अभी भी हम इतने बड़े हो गए फिर भी टीवी पे कुछ आता है तो थोड़ा सा प्रिटेंड करना पड़ता है कि क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। So yeah. वो बट अभिषेक उसके बाद उपन्यु थोड़ा वाला। बड़ा हुआ था ना, धूम टू में भी था। दैट टाइम इट वाज awkward because now my parents knew I knew what was going on. I knew my parents know I know what was going on. So yeah. I remember वो अभिषेक उपन्यु का एक वो है ना स्टैंड अप एक बिट है वो, that porn वाला, like he's watching, his dad comes in and क्या बोलते हैं, he's like अरे मेरे फ्रेंड से मैंने उसने बोला एक्शन फिल्म है, एक भी एक्शन सीन नहीं है इसमें, he's watching porn basically, so he's like एक भी एक्शन सीन नहीं है क्या, घटिया फिल्म है, रखो इसको साइड में। अलग एक्शन है। ओह बाय द वे मैंने लिंक अपने पेरेंट्स को भेज रखा था, चलो कोई बात नहीं। ये Now they know. YouTube वीडियो, हाँ। Arnav, please go ahead. Tell us your मतलब moment, your deflowering My moment moment. in front of your parents, वैसे ये वाला। हाँ, ऐसे ना एग्जैक्टली एकदम से मोमेंट याद नहीं, बिकॉज इंग्लिश मूवीज मैंने बचपन में मैंने बहुत देखे, तो वो हर इंग्लिश मूवी के एंड में एक सीन वो आ ही जाता था, आई यूज्ड टू साइलेंटली वॉक टू द वॉशरूम क्योंकि मुझे पता है वो दिख रहा है एंड सब लोग बैठे देख रहे हैं, तो इट यूज्ड टू फील वेरी ऑड। प्रॉपर्ली अगर वैसा हो ना, तो आई रिमेंबर राज व्हेन आई वाज इन क्लास 5,
एक तो पता नहीं उस मूवी देख के मेरी इतनी फटी थी, पता नहीं क्यों फटी थी और उसमें डिनो मोरी एंड विपाशा हैड हैड लाइक काफी लंबा स्ट्रेच, दो गाने पूरे भरे उसमें वैसे. अनदर वन आई थिंक एवरीवन रिमेंबर्स इज आशिक बनाया. ये दोनों मेरे लिए प्रॉपर मेमोरीज है, लाइक इंटीमेट एंड एवरीथिंग. मेरे साथ एक और चीज हुआ था. माय मॉम, this happened when I was like quite grown up. Like my mom took me for a movie. My mom literally took me for a movie. वो आई थी कुछ काम से, I was coming from college. So we went for Bombay Talkies, this anthology of Oh my movies. God. Yeah, and I actually had no clue कि उसमें क्या है. मैं मम्मी बोली कि चलोगे, मैं यहाँ आई हूँ. मैं बोला हाँ ठीक है, मैं कॉलेज से आ जाता हूँ, चलते हैं मूवी, क्या दिक्कत. And the first movie itself, and the first movie had and such a like offbeat intimate scene. And I'm like, अच्छा हाँ चलो ये भी देख लिया, इनके साथ बैठे, मैं बाजू में मम्मी बैठे थिएटर में. So that was a very awkward moment उस टाइम पे. That is हाँ मतलब this can go, I think. Shakti, what about you? यार मैंने मूवी में देखा था दिल या बेटा, दोनों में से एक था पहले. I had seen because Dil has a kissing scene proper, and so does Beta. And वो क्योंकि उस टाइम पे वो they were like family movies, kind of love stories. Raja Hindustani also. Yeah, that That came was in my like first. Amir has kissed a lot of his posters, right from Kayamat Se Kayamat. Even Lal Singh Chadda. And सब में, if you look at it deeply, I think you'll find a kiss in every movie. And Madhuri also in Dayavan. I mean, I remember seeing that also, right? That's also there. So in movies that, and normal kissing, like basic kissing, I've seen in shows, as I told you, right? Television में जब English shows आते थे, a normal kiss would be very natural over there. So वो awkward नहीं लगता था. But when I would watch a Beta or Dil with my parents, that would suddenly everybody would start shifting slightly, looking at each other on the ground or something else, as if nothing is happening on the screen. That was strange. Then we saw Gupt as a family. My parents and I, like my sisters, my father, my mother, we see Gupt. और वो पूरा picture ही adult movie. उसके पहले we saw this thing, यार. Previous year में we saw a family movie. I'm forgetting the name. 97 में आया था something. And उसके बाद Gupt देखा था. I'm like ये एकदम strange, like transformation है. Like parents के साथ Gupt देखना is not a good idea. Yeah, I'm sure it wasn't. I watched Dostana with my parents, which again wasn't a great decision. Like I still remember when we had gone to watch the film, and उसमें क्या हुआ? So मतलब they after point they know वो मादल आडल बिगड़ गया मतलब क्या मतलब है उसका. तो और मेरे को अभी भी लग रहा है कि नहीं मतलब ठीक है. And अब इंटरवल आ गया and they like चलो हो गया बहुत अभी. अरे नहीं आगे तक अच्छी बनेगी मूवी, पक्का अच्छी होगी. तो बिठा दिया मैंने, बिकॉज मेरा बचपन से ट्रेडिशन रहा, आई डोंट लीव अ फिल्म. लाइक मेरा पैसा लगा है मेरे को पॉपकॉर्न इंटरवल में ही खाना है. सो मैं आई डोंट मतलब मैं घड़ा नहीं होता कैसे भी फिल्म हो. एंड उस टाइम से चाय से था वो, आई वाज लाइक अरे नहीं आगे पक्का अच्छा होगा, मुझे पता है पक्का अच्छा होगा. एंड आई वाज 5-6 years old. But yeah, like that wasn't a good experience of watching it, but I still remember dancing on that Madal Adla song in weddings. So I think we sort of had a truce that way. But Saharsh, yes, what's your experience with kiss scenes? No, when it comes to bad decisions, I think I can do you one better. I watched James Bond with my grandparents. So can imagine how that must have gone. Like I don't know what was the first kissing scene I saw, but that experience was the most awkward one I've had so far in my whole life. Like I think it was Casino Royale, and we were watching it on TV, and this was before Netflix, so you can't pause or, I mean, you can't do anything of that sort. So when things started to happen on screen, I changed the channel, hoping कि ठीक है अभी 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा, फिर वापस बैक करके देख लेंगे. तो 30 सेकंड में वापस स्विच किया, वापस चल रहा है. फिर तो I would start getting awkward looks towards me, and then okay, I'll change it again. ठीक है अभी एक मिनट दे देता हूँ. It happened again. I don't know. We stopped watching it then. After I didn't have any option. I felt very bad because Casino Royale was like an amazing movie, man. It was going very well. Yeah. And it's so weird that मतलब
like it's like as if आपको बुरा लग रहा होता है कि यार sorry आपको मतलब बुरा फील होता है, like you feel apologetic and like You your are not parents doing it. But हाँ like पहली बार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने बनाई भी नहीं है, like I don't know कितना लंबा सीन है, so don't look at me like that. पहली बात तो Yeah, I exactly. don't know. Yeah, Casino Royale is damn good. I didn't, for this reason, I didn't get to properly watch it until maybe I was like 20, man. Like, through and through. Oh my god. Savni, tell us. Hi, first of all, I think I'm audible properly and visible, right? Yeah. So, first of all, hi, Basundhara. hello. I specifically mention you because I've been following you since so many years, and this is like a fan moment for me. So, hi. Amazing. आप लोग को एक breakout room में भेज देता हूँ मैं, अलग से कुछ बातें हैं. Yeah, and moving forward with my story, my scene starts from a condom ad. I was sitting there in the hall. We had a family gathering. My Mosi, uncle, everybody's sitting there. Everybody above 50. I am there. Only one person who's below 20. Ad me, that model takes a banana, puts chocolate sauce over it. खत्म होगा because इसके मैं नहीं switch कर सकती है. And my father's like, change, put something else on the television. I'm like, nahi, papa, the movie is going to be there. And he's like, what is there to see in this? In the ad. And I couldn't explain what is there. So I switched. That was my experience with my parents as of like full everybody felt. वैसे तो my first kissing scene was Vampire Diary, the entire vampire series movie, okay, not the TV Twilight. show, but the movie with Robert Pattinson. Twilight. Yeah, sorry, yeah, Twilight, sorry. So that was my first thing, and after it was Masti, Grand Masti, and then I don't know the third part, Great Grand Masti, I think. So, You watched all the three? first one, my papa made me watch because What? he was, yes, it was because I have told the story in abstract because my father worked for Vilasrao Deshmukh. He was a very close knit group. He belonged to a very close knit group of that politician. And just because it was Ritesh Deshmukh's film, so my father's like, let's watch Masti. And I'm like, no, Papa, we'll watch something else. And he's like, no, we'll watch it. It's a nice movie. No, it has good songs. It has good songs, but those are very good songs, Papa. We don't need to watch them. And he's like, no, we'll watch. And then there is Lara Datta and Vivek Oberoi dancing in rain, and she's dancing in an orange sari or something like that. And it was a very, yeah, it was like, the song is really nice, but Papa, I cannot watch it with you. And then there was Grand Masti, second part. Savni, we can't And hear you that actually was properly. weird. Now you all can hear me. Yeah, I think. Yeah. Yeah, so then there was Grand Masti, which was worst because even if there weren't any kissing scenes, there was a lot more. It was basically soft porn. So yeah, that's my story, and very awkward story with my parents. Oh my! I remember Grand Masti earned like over 100 crores or something, which is why the third part also came out. Like it earned a lot of money for some reason. Harsh, yes. Actually, I'm the perfect I segue want for to this. listen to his experience of watching murder as a child. I was going to say that. So actually, fortunately or unfortunately, I don't remember what happened in that theater. But see, the thing is, if you are watching at home, you can skip the channel or change the channel. In theater, you don't have that option. You have to watch the entire movie. At least it's dark. So, yeah. You don't see other people's faces. Yeah, that's the silver line. So actually, I still don't remember how did I watch that entire movie with my parents when I grew up. And then when I, watched that scene, and I was like, what? Did I really watch this with my parents at that time? So I watched actually, as I said, in that year, Masti and Murder back to back in, I guess,
I was in same month also. I don't remember the exact months, but it was in the same year for sure. I know that I watched these movies with my parents. So I think these were my deep Masti flowering was in memories. March, April. Coming of age. Coming over. Masti was after March in 2004 something. It was vacation time because I remember कि हम ऐसे घूमने गए थे vacation के time पे, summer vacation ही था I guess. So yeah. You know, before we move to Shubham, एक फटाफट से एक photo ले लेते हैं. If everyone could quickly start their videos, would have taken this earlier as well. Forgot. If yeah, I think 11 बज गए तो I think हीर के वहाँ तो light शुरू नहीं होने वाली. So I understood that. Yes, smile guys. Just 1 second. Yeah, smile guys. Thank you. Shubham, yes, please. Also, like I'm adding another question. I'm adding another question. साथ में, along with the first kiss, also mention the first cry you had in a film. Oh, good. Yeah. Easy. So मेरा पहला किस जो मतलब देख नहीं पाया था, that was राजा हिंदुस्तानी. So मेरे घर में ऐसे मतलब 10th क्लास तक ऐसे केबल नेटवर्क एंड ऑल नहीं होता था, सिर्फ DD1 DD2 ऐसे चलता था. तो ऐसे कभी वेकेशन एंड ऑल में ऐसे जाते थे कजिन्स के, है ना, तो वहां पे देखते थे. तो केबल टीवी पे याद है, मतलब हॉल में नहीं देखा था, केबल टीवी पे रिमेंबर वो कोई मूवी आती थी तो रात भर रिपीट पे चलाते थे. तो मतलब रात में चला के वो छोड़ देते थे, ऐसे कोई भी नई मूवीज रिलीज होती थी, पायरेटेड वर्जन्स टाइप से. तो राजा हिंदुस्तानी चल रहा था एंड लेट नाइट ऐसे सब कोई कजिन्स लोग एक टीवी के रूम में ऐसे जम के देख रहे थे. एंड सडनली वो जब राजा हिंदुस्तानी, क्योंकि मेरे कजिन्स ने रिपीट पे देख रहे थे, सेकंड टाइम देख रहे थे, तो मैं पहली बार देख रहा था. तो आमिर और करिश्मा का जब सीन आने वाला था ना वो बारिश पेड़ के पास, तो मेरे को बोलते बाहर जा. मेरे को बहुत बुरा लगा यार कि ये क्या है, तो मस्ती साथ में चल रही है, ये हमें क्यों बाहर भेज दिया जा रहा है, मतलब बच्चा समझ के. तो बचपन में ऐसे होता है ना कि आपको कोई बहुत बच्चा समझता है तो अंदर से गुस्सा आता है कि यार जल्दी क्यों नहीं बड़ा हो गया मैं. तो उस समय बाहर भेजा, बट मैं फिर भी विंडो से देख लिया कि किस मतलब क्या. तो उस समय तक इतना नहीं पता था कि ऐसे लिप्स टू लिप्स किस एंड ऑल क्या हो रहा है. बट वो मेरे को जो बुरा लगा था ना कि मेरे को रूम से बाहर निकाल दिया गया, मैंने फिर भी ऐसे पर्दे से ऐसे चुपके से देख लिया था. तो 1996 वाज राधा हिंदुस्तानी वाज मतलब वे टू यंग किड. फिर 3 इयर्स लेटर मतलब उसका कनेक्टिविटी ना ऐसे बना. फिर 3 इयर्स लेटर मैंने 1999 में हम दिल दे चुके सनम देखा, ठीक है. एंड रिमेम्बर उसमें सलमान और ऐश्वर्या का डायलॉग है ना कि किसका बात होता है, तो सलमान बोलता है, तो ऐश्वर्या बोलती है कुछ हो गया, तो बोले क्या हो गया, तो बच्चा. तो मुझे लगा हो तेरी ऐसे हो जाता है तो मुझे लगा इसीलिए मुझे रूम से बाहर भेजा गया था. इट इज सच अ स्कैंडलस एक्ट. इसीलिए मुझे रूम से बाहर भेजा गया था उस दिन. तो ये था मेरा ऐसा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसे कनेक्टिंग में. अगेन मेरे पास टीवी नहीं था, तो मैं किसी दोस्त के यहाँ से वो तैयार हो रहा था, हम लोग खेलने के लिए बाहर जा रहे थे, तो टीवी का रिमोट मेरे हाथ में था. ऐसे सेम ब्राउजिंग टीवी में तो ऐसे नेक्स्ट 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 चैनल करते रहते हैं. तो अचानक फैशन टीवी आ गया. ओके, एंड FTV आ गया. मॉडल रैंप वॉक एंड ऑल चल रहा है. और मतलब कसम से मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, रिमोट अटक गई, नेक्स्ट चेंज ही नहीं हो रहा है. उसके पापा आ गए रूम में, मेरे फ्रेंड. मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, रिमोट ठोक रहा है, यार चेंज हो जा, क्या हो गया, मतलब दिस इज. मैं सही में उस फ्रेंड के पास उस घर में दोबारा नहीं घुसा मैं. मतलब मैं ट्राई किया कि भाई ऐसा मतलब स्पॉट लेके तो अभी पेरेंट्स को मैं उसके वापस नहीं फेस कर सकता. उनको क्या लग रहा होगा कि मेरे घर में आके ये फैशन टीवी देखता है, ठीक है. Then first incident when I cried, I remember it very clearly, and I still cry on that part of the movie. It was Sholay, and TV पे देख रहा था Sholay, and when Amitabh Bachchan died, मतलब मेरे को अभी भी goosebumps आ रहे हैं. I cannot like recall that scene when he dies. उसके हाथ में वो सिक्का निकलता है, दोनों तरफ वो हेड निकलता है, and like it is such a deep emotion. बहुत बच्चे में देखा था मैं ये मूवी. एंड शोले के साथ ना पापा के साथ एक अच्छा मेमोरी जुड़ा है. शोले जब भी चलता था ना तो पापा ऐसे बैठा के दिखाते थे, देखो अच्छी मूवी है, बिकॉज पापा अपने जनरेशन में अमिताभ बच्चन के फैन, तो वैसे दिखा देते. एंड एंड आई यूज्ड टू क्राई एवरी टाइम आई हैव सीन अमिताभ बच्चन लाइक वहां पे डाइंग, एंड वो सिक्का वाला जब रिवील होता है तो
such deep emotions. Very few actors can make me cry, even though मैं बहुत involve हो जाता हूँ सिनेमा में, but emotional scenes में अगर बात करूँ तो मतलब शाहरुख and अमिताभ बच्चन का like 100% ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे को रुला देने का. मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो दोनों का कोई ऐसा इमोशनल सीन चल रहा हो रिस्पेक्टिवली और मैं रोया ना हूँ. So that was for me. That's amazing. That's amazing. Shafali, what about you? Yeah, so should I start with the awkward scene with parents or the crying scene? Whatever you're comfortable with, or Yeah, whatever your awkward parents are scene तो comfortable with. they are sleeping right now. But हाँ, the earliest memory is like जैसे सबने कहा था राजा हिंदुस्तानी and टाइटैनिक. तो थिएटर में देखी थी, अंधेरा रहता था तो ऐसा awkwardness कुछ रहा नहीं because I was very young. और टाइटैनिक के लिए गए थे एक्चुअली. बड़ा शिप है. सबसे बड़ा शिप है. मुझको ये कहा गया था कि सबसे बड़ा शिप था और वो डूब गया. यही स्टोरी है, बट आई डिडंट नो इट वाज मच मोर देन दैट. तो हाँ, जैसे बसुंधरा ने कहा कि पहले ज्यादा सेंसरशिप नहीं होता था थिएटर्स में भी. एंड द सेकंड वाज राजा हिंदुस्तानी. बट द वन आई रिमेम्बर वाज मम्मी, जो इंग्लिश मूवी है. इट वाज हिंदी डब्ड वर्जन और मुझको देखनी थी बिकॉज जिस तरह से उसका ट्रेलर और मूवी का टीवी पे आ रहा था तो मम्मी देखनी है. एंड आई डिडंट नो कि उसमें न्यूड भी सीन है. एंड दैट अनुक सुनमन जो एक कैरेक्टर है, शी इज लाइक almost nude and she has this kissing scene. And I went with my father, only my father, to watch it in theaters. तो तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो लाइव मम्मी बना रहे थे ना, and they are putting crepes on the live human beings and उनके वो जीभ काट रहे, तब मेरे फादर मेरा ऐसे आंखों के सामने हाथ रखते. उन्होंने पहले नहीं रखा, जब किसिंग सीन चल रहा था हो गया तब कुछ नहीं रखा. बट हाँ, कि जब वो वायलेंट हो रहा है, then is like you shouldn't watch this. So yeah, and he was okay with that, but not with violence, I guess. And crying, I wasn't a big crier while I watched the movies. तो ऐसा कुछ बहुत बार रोने नहीं आया, but I was very much involved with Harry Potter. I felt like I basically grew up with Harry Potter, with the books and the movies. Like same age के थे हम लोग. तो Daniel Radcliffe was obviously my first crush. तो हाँ, when the seventh movie came, part 2, when it ended, yeah, I literally cried at that time. It was very emotional. So yeah, That's so Harry Potter. nice. Yeah. Harry Potter, 8 film. Yes, yes. but अभी तक मुझे समझ नहीं आया किसी ने फर्स्ट किस में अभी तक स्पाइडरमैन मेंशन क्यों नहीं किया यार. मतलब स्पाइडरमैन हम लोग स्पाइडरमैन 2 स्कूल से देखने गए थे, हमको लेके गए थे क्लास ट्रिप पे, तो दैट वाज देयर. आई रिमेम्बर. या स्पाइडरमैन 1 में जो वो उल्टा किस जो है, उल्टा लटक के इतना बस इतना खोलती है वो. Yeah, that was the first time I saw it. Yeah, घर पे था मैं, याद है. But before I move to Anshika, Basundhara, what about you? Which is the scene that you remember that made you cry as a kid? Earliest films I think could be something like Kal Ho Na Ho or Veer Zara, that time. Because उससे पहले I didn't really used to get very emotional watching. I enjoyed, but वो emotions catch करना wasn't very easy as a child. मतलब obviously कोई मिल गया ठीक है, थिएटर में था तो दुख हुआ था when Jadoo left and all those things, but it's not like I cried or something. But like when Aman is dying in Kal Ho Na Ho, or Veer Zara especially was very emotional in terms of जब वो बिछड़ जाते हैं, वो दो पल रुका वाला सॉन्ग. मतलब at that time you don't even understand love as an emotion and all, but वो फिर वो ऐसे बनाते हैं ना, स्लो मोशन में जा रहे हैं रोते हुए, फिर लता मंगेशकर गा रही है. You cannot help it. So ऐसा हुआ होगा. And consciously like actual दुख हुआ कि मैं रोई, मतलब what I felt from inside was probably तारे ज़मीन पर. जब वो भी थिएटर में देखने गए थे तब वो एक I don't remember which class I was in, depends on which year it came in. 7, 6, 7 में आया था.
हाँ तो I was what 15 or something, but एक I mean I was older than ईशान अवस्थी obviously, but उस बच्चे ने इतना सही एक्टिंग किया था, और वो बोर्डिंग स्कूल में जाने का दर्द और वो माँ के लिए रोना, मतलब तब से मुझे लग रहा था कि एक टाइम पे मुझे घर छोड़ के कॉलेज जाना पड़ेगा, बोर्डिंग स्कूल नहीं सही, बट तो वो फील हुआ था मुझे, शायद प्रॉपर रोना मैं तारे ज़मीन पर कोई बोलूँ। You know, but like before again, आपसे बात करने का मौका शायद कम ना मिले, इसलिए I just want to ask one two more questions to you specifically. Like if you got a chance, would you like to change anything about the kind of films you watched growing up? मतलब like for example, for me it is always I feel the sense of not for films per se more, but more for the kind of books I read, because बहुत limited exposure था मेरा personally to the kind of books I was reading. So मुझे काफी बार आता है कि यार मुझे मौका मिला था, I would like to change that about myself, because when I काफी लोग abstract में भी और बाकी मैं सुनता हूँ देखता हूँ, they have a very high influence रहा है बचपन में, एक आर्ट का एक वो रहा है, और मेरे बचपन में उतना वो नहीं था. So मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं पेरेंटिंग करूंगा ना तो मैं ये बदलूंगा. So like does that thought come across your head that like, is there something you would like to change about the kind of content you consume growing up, irrespective of the format of it, but like would you ever like to change anything about it? Actually no, I think I am quite happy with whatever, because जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे 90s की मूवीज अब देख रही हूँ मैं, और वो काफी हद तक मुझे रिग्रेसिवनेस जो है वो अभी मुझे पता चल रहा है, एंड आई एम अ बेटर जज ऑफ इट नाउ rather than what I watched, like ये सारी स्टॉकिंग वाली चीजें, या फिर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट कॉन्सेंट जो होता था 90s के टाइम के मूवीज पे. तो आई एम ग्लैड आई डिडंट वॉच दोस थिंग्स एज अ चाइल्ड. आई एम नॉट सेइंग दे वुड हैव इन्फ्लुएंस्ड मी मच, बट अभी मुझ में वो समझ है कि मैं आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. तो एक्चुअली like Arnab said, बचपन में if I was watching Hindi movies, it was mostly all this Rishikesh Mukherjee comedy kind of stuff, or Satyajit Ray movies. So I think my parents were a bit conscious about what they allowed me to watch. So even ये म्यूट पे पता नहीं क्या बोलता रहता है, चुप रहे, उसका ऐसा ही है, इसका बॉडी लैंग्वेज चलता रहता है. तो बेसिकली या दैट्स द थिंग, मतलब वो काफी थोड़ा स्ट्रीमलाइंड था कि मैं क्या देख सकती हूँ क्या नहीं, एंड आई डिडंट हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. लाइक घर पे जो सीडीज डीवीडीज भी आते थे वो दे वर काफी क्यूरेटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे थॉट आई शुड वॉच. ऑब्वियसली टीवी पे चुपके बहुत कुछ देख लेते थे, वो अलग. आशिक बनाया अपने भी मैंने बचपन में छुप के देखा है, दैट इज अनदर थिंग. बट दे ट्राई टू कंट्रोल. I mean, I wouldn't say it's totally good to have complete control, but जब तुम्हारा माइंड इतना इम्प्रेशनेबल है बचपन में तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, जो मुझे लगता है आजकल के जमाने में लैकिंग है, बिकॉज किड्स हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. दे आर ऑलवेज सिटिंग विद द फोन, जितना भी चाइल्ड लॉक लगा लो. तो that's the thing. So I don't really regret. I'm glad I'm watching the stuff I missed out on now, because now I can see them through the lens that they should be seen. So मुझे इतना कुछ regret नहीं है, to be honest. Yeah, that's interesting. Like even before we ask about people's best kisses or first kisses in the films, I think we should take this question as something that we can talk about. So like I think Anshika has raised her hand. Would you want to talk about the question I have asked specifically? Like I think this is a good topic we can discuss about. So like if you guys have raised your hand, then I specifically want you guys to talk about this more. Like, would you regret the kind of things you possibly were exposed to growing up? Would you like to change anything about it? No, I don't think I would like to change anything, because as Basundhara said, like we had limited access to like certain kind of things. And but when I look at the kinds of film I have watched as a kid, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कंज्यूम किया था which shaped my thinking, like I became a bad person or something, like मैंने कुछ ऐसा किया उसके influence में. So I think I watched pretty much decent content. मैंने कुछ होता है वगैरह वगैरह सब कुछ देखा, but it never like influenced me in a bad way. मतलब it used to give me a hope. I was a tomboy growing up, तो मैं हमेशा से I used to dress up like a boy. मैं ये हरकतें करती थी, मेरे को अंजलि से relatability हुआ,
but it used to give me a hope, not like कि शाहरुख आ जाएगा और वो मर जाएगी but like certain kinds of hope. तो like better content तो था मेरे list पे. Like I remember अभी हम बात कर रहे थे कि एक show जो I remember watching Best of Luck Nikki. Such a cute show डिज्नी पे यार. आता हाँ डिज्नी पे आता था और कितना क्यूट था. और लाइक अगर मैं अपनी लाइफ की हर वो टाइम को देखूं ना तो कितना अच्छा अच्छा चीज होता था. लाइक गुमराह और ये सब वी पे आता था. सुवरीन गूगल टॉपर ऑफ द ईयर. टीनेज में भी कितना बेटर कंटेंट होता था टू वॉच. लाइक फील गुड कंटेंट. डी3 दिल दोस्ती डांस एंड ऑल. बचपन में भी सो मेनी कार्टून्स लाइक टॉम एंड जेरी. आई रिमेम्बर मैं हर वक्त बैठ के टॉम एंड जेरी देखती रहती थी. शायद इसीलिए आज पीकू को लेके बैठी हूँ. आई एम जस्ट लाइक कि हमेशा मैंने जेरी को सपोर्ट किया. अभी मेरे को टॉम चाहिए घर में. जेडी तो कोई पालता नहीं है, क्या ही करे. एग्जैक्टली. और लाइक बहुत बेटर कंटेंट. आई थिंक मैं अभी अपने भाई को कुछ ज्यादा सजेस्ट नहीं कर पाती टू वॉच. मेरे पास नहीं है लिस्ट. अगर मैं उसको बोलूं कि वो क्या देखे. लाइक मेरे को याद है आई वाज लाइक ओनली चाइल्ड और घर पे कोई होता नहीं था. लाइक दादी दादाजी मम्मी पापा सब लोग वर्किंग था. तो स्टिल आई हैड थिंग्स टू डू. बट अभी मेरे भाई के पास फोन में या लैपटॉप में गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं. और उसमें भी वो पबजी खेल रहा है. लाइक मेरे को याद है मैं बाल हंस और ये सब आता था यार उधर. तो मैं उसमें स्टोरी राइटिंग करके भेजती थी कि मेरी स्टोरी किसी दिन पब्लिश हो जाएगी और ये हो जाएगा. सो लाइक वी हैड सो मेनी थिंग्स टू डू. सो मेनी थिंग्स. हमारे लाइक आउटडोर गेम्स होते थे. हम खेलते थे. सो आई थिंक वी हैड अ बेटर चाइल्डहुड. तो अभी तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है. व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड फॉर द बेस्ट. That's so nice. Yeah, that's so nice. I mean, it's very good perspective to have ki matlab the fact that I was exposed to this kind of stuff led me to choose the kind of things I'm watching today. Matlab now I can filter and watch the kind of content I want to watch. पहले शायद नहीं था, बट अगर मैं उससे एक्सपोज नहीं होता मुझे पता भी नहीं होता कि भाई मैंने किस लिमिट तक देखा है, मैं कैसे शेप हुआ हूँ. एंड एक कैरेक्टर आर्क चाहिए ना खुद की लाइफ में, वो नहीं आएगा अगर वैसा नहीं होता तो. But I think I would मर्डर सॉर्ट ऑफ फिल्म लाइक जो भी अडल्ट कंटेंट भी आता था वो ऑल्ट बालाजी टाइप का नहीं था. अगर देखा जाए जो अभी ऑल्ट बालाजी पे कुछ भी बना रहे हैं. सो like they had at least stories to tell. Dude, Murder is an Anurag Basu film. It's not bad. या मतलब लाइक कोई भी ऐसा कंटेंट अगर देखा जाए तो मतलब आज मेरे को लगता है लाइक डेली सोप्स. पहले वो आता था श्रीमान श्रीमती, हम 5. और अभी तुम लाइक अगर हम टीवी पे देखें तो क्या देखते हैं? कुछ नहीं. नागिन के पता नहीं कितने वेरिएशंस आ चुके हैं. सीरियल्स की तो बात ही मत करो. वही लाइक वो शाकालाका बूम बूम सोनपरी वाले दिन, सोनपरी वाला टाइम था. और नागिन में भी अगर एक्सपोजर मिला तो श्रीदेवी लाइक डांस वांस था. बट अभी देखो ना अजीब अजीब टाइप का नागिन आ गया है यार मार्केट में. अजीब टाइप का मार्केट में नागिन आ गया. Harsh, what about you? Tell me a little bit about your experience with the kind of things you have watched. First, I'd like to answer that first question because वो crying वाला. So I think I also share this thing like Tare Zameen Par has been that movie जिसपे I literally like cried. One more movie which I like because मुझे ऐसा रहता था mostly अगर कुछ मूवी सब देख लो तो I used to connect and then ऐसा not exactly cry but वो पूरा से सम हो जाता है ना, एकदम सहमत हो जाते हैं सब. So उड़ान was such movie for me. उड़ान देख के I felt that ऐसा एकदम. And if you guys know this movie वक्त रेस अगेंस्ट टाइम उसमें भी ऐसा थोड़ा वो लास्ट का जो सीन है ना वो वाला सीन है. फिर या दिस मूवीज बागबान भी अप टू सम एक्सटेंट यस ऐसा थोड़ा इमोशनल कर देता है. बागबान तो गुस्सा आता है मेरे को और कुछ नहीं. नहीं लास्ट का सीन थोड़ा हाँ तो या सो मतलब उस वक्त थोड़े से इमोशनल लगते थे मूवीज. तो या दिस वर माय अब इमोशनल मूवी अबाउट दिस थिंग कि बचपन में मतलब डू यू रिग्रेट और नॉट व्हाट यू वॉच्ड. सो मेरा ऐसा एक्चुअली रहा है कि मैंने ना बहुत ज्यादा ड्रामा देखा है बचपन. लाइक लॉट ऑफ फैंटेसी बहुत कम देखा है. लाइक अभी हैरी पॉटर वगैरह ये सब मैंने एक्चुअली कॉलेज में आके देखा है. लाइक अंडरग्रेड एकदम लास्ट में ऐसा.
तो आई थिंक ये थोड़ा फर्क पड़ता है. दिस थिंग शेप योर थिंग काइंड ऑफ थिंग यू वॉच ग्रोइंग अप. सो अब जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में मुझे ज्यादा फैंटेसी या सुपर 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 पावर वाले मूवीज नहीं पसंद आते, बिकॉज मेरे दिमाग में ना वो इमोशन वाला मूवी, लाइक इट हैज टू बी ग्राउंडेड टू रियलिटी, लाइक सम वे ऐसा. भले ड्रामा हो बट ऐसा है. तो मैं बायोग्राफिकल मूवीज बहुत देखता हूँ, मैं ड्रामा देखता हूँ काफी, but I don't watch these fantasies a lot. I think maybe because I didn't get much exposure in my childhood. So that's why what I do is मैं अपने भाई को ना सब मैंने अपने भाई को सारे हैरी पॉटर के मूवीज दिखा दी है. I have made him read Lord of the Rings, all the 3 books. Like he read all of them the entire in one month पूरा. उसको बैठ के पढ़ा है, तू पढ़. So उसके बाद उसको ये सब वो ना अपना हिचहाकर्स गाइड टू गैलेक्सी ये सब he started reading it. So अब उसको ना थोड़ा फैंटेसी का अपने आप वो लगा. So I think I'm not regretting it कि ऐसा नहीं मिला मुझे एक्सपोजर. आई थिंक अच्छा ही है, मतलब आई हैव वन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी नाउ. बट अगर इफ आई हैड गॉट अ फैंटेसी का एक्सपोजर तो सही रहता है, एक वो कंपैरिजन रहता बचपन में. Yeah, I think I also tend to sort of overcompensate at times. Um, like I haven't grown up watching Terminator, or the only series, like series as in series of films that I've watched is of Rocky, because my dad used to love Rocky and Sylvester Stallone and all of that. So and I don't regret that at all, because it's genuinely good. It's really good storytelling, by the way. But उसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं. I have not watched Harry Potter growing up. I did not watch Lord of the Rings growing up, or even what was this, Indiana Jones growing up. So I have finished all these now, so that I can tell कि हाँ मैंने देखा है. So it's more out of a sense of wanting to feeling belonged, and ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं है. So I also tend to overcompensate for that thing. And in my all the cousins that I have, young cousins that I have, उनको मैं I'm trying to curate films for them. कि यार watch this, like watch that. I tend to do that a lot personally. Sarsh, what about you? Also, Basundhara, if you ever like, if you have to leave or anything, just let us know. कि जब भी कुछ हो तो. No. I was just checking my WhatsApp. ये ना मैं देख के नहीं बोला. I just चमका. I just saw the time, which is why. नहीं. Yes, Sarsh, please. Yeah. Yeah. First of all, I'm surprised no one said Lion King for the first movie they cried though. As a kid, yeah, the scene where Mufasa dies from that cliff, yeah, that was my, I think my first memory of crying. Coming to the other question you raised about, do you regret anything about the kind of content you were exposed to, or would you want to change anything? Maybe I want some years back where my parents forced me to watch Ye Rishta Kya Kehlata Hai, or maybe I would be always open to changing those bits of my consumption. But I think this what kind of content you consume sort of depends on what circle you are in. Like, तुम लोग के peer group क्या देख रहे हैं, वो sort of inevitably leads to you watching the same things. So I remember when I used to be in an old school, when I used to watch very I mean basic stuff like Session Shan or matlab regular what any random kid of that age would watch. But then maybe I've moved to a different school and place. Then I was exposed to so many different sort of things. Kids would like, I remember like kids would talk about this music, like English songs, like Metallica, Green Day, and many सब क्या है. Like I would be so clueless. And same, like I had a best friend in 6th standard. He watched like some Sherlock Holmes ka, that Robert Downey Jr. ka movie, and that was also like very new. Like, ये क्या चीज है? But I think I overcompensated for it so much. I think I've beaten all of them when it comes to pop culture. Like I'm glad sort of that happened. Like it like shaped my trajectory in such a way that like FOMO से इतना भर गया था कि सब देख डाला. Like this even happened with maybe internet, like when people would talk about so many popular things like Star Wars or any other piece of popular fiction that everyone's seen. So like I would go out and then first watch it and then move to something that I started maintaining a watch list at some point, like which now has moved beyond like maybe I don't know some 2,000 different items or so.
but it I don't know how to describe it, but I wouldn't change a thing. Like even as a kid, I was exposed to so many right things. My brother would like once in maybe 11th standard just came and forced me to say, "ये देख Death Note है, ये सीरीज है, देखो देखना पड़ेगा." मतलब ये एनीमे मैं नहीं देख रहा, ये क्या ये कार्टून है, ये तो ये बड़ा हो गया मैं. And then like नहीं देखो देखना पड़ेगा. So he sat next to me and I watched first episode. And next second episode, and then he didn't have to say that anymore for me to finish watching Death Note. So yeah, that's just one example. Also, like I remember when I was very young, I used to watch, like I was a big fan, I was a big nerd, so I would watch like Discovery Channel, Nat Geo, Animal Planet. So उधर भी like that. I know मेरे groups में से कोई था नहीं जो ये सब देखता था, but like later on in my life I met so many people that had that nerd quality into it, and I could like relate to them with so much, and like we connected in so many different ways. Like this now we can share like science, cool, interesting videos now, and like I wouldn't change a thing. So in that, to answer that maybe. And now That's to circle back, we Spotify I have like 7,000 songs, so I guess I beaten them in that. Now your trauma cycle is complete. Yeah. But like I also agree to that. Like these small things that I still remember. For example, like you mentioned, Discovery and all of that. हमारे ना बिल्डिंग में आते थे every now and then to sell Oxford dictionaries या फिर some of these video cassettes or these CDs of Discovery या फिर किसी अलग-अलग brands के होते थे. Encyclopedias and all this. Yeah. So एक आता था हमारे यहाँ पे आया था पूरा एक collection catalog लेके आया था of this. I don't know if it was a scientist himself, but Bill Nye नाम का एक बंदा था. I don't know if anybody knows. Bill Nye the Science Guy. Yeah, Bill Nye the Science Guy. Yeah, that guy. Yes, वही. So उसके मैंने बहुत videos देखे थे while growing up. Like all his CDs में. I also still vividly remember. Randomly, I think I had bought this CD catalog. जिसमें it was about it was basically documentaries and footage of really old things that happened in the world. So one of the important things I remember watching was they had recorded, or they had the footage of from inside the flight or the aircraft where through which the Nagasaki, Hiroshima पे जो bomb गिरे थे, वो मतलब from the inside एक तरीके से उसके footage थे. So I still remember seeing that. I was very young. I'm like कैसे कर रहे हैं ऐसे? Like I couldn't comprehend the कितना बड़ा वो चीज था, but just I still remember those bits and pieces of things. And तब से मेरे को था कि क्या बोलते हैं, the importance of camera, the importance of capturing things, documenting things as much as possible. अच्छा हो खराब हो कैसे भी हो, but just to the fact that I had that, I still can't find those footage online. Like I still can't find the behind the scenes of the bombs being thrown. एक तरीके से. So it's like वो कहाँ है CD? I want to watch that. I think BBC का ही था, if I'm not wrong. That entire hit CD catalog, I think उनका ही होगा. But just very fascinating to remember these small details. Arnab, yeah. I don't exactly remember the first movie into which I cried. Could be कुछ होता है का वो जो part जहाँ पे काजल comes and break down मेरा पहला प्यार. I don't exactly remember, so I will not go it. I rather remember the first book which I read and literally cried out. It was Pather Bachali. Not exactly where she dies, but the exact scene I still cry when I watch the movie. Book तो मैंने 2 बार पढ़ा है, but उसके बाद ना ज़्यादा हिम्मत नहीं, because it's a very long, arduous journey to read through the entire book, and then it's a tragedy at the end of the day. But that exact point where he comes back and she has to break the news to him that like the daughter is no more. I every legit like it's an uncontrollable thing. It just comes out. I think that I remember. And about growing up, I think I had a very similar journey and a very similar thing which Basundhara said. I was mute पे मैं ही बोल रहा था. I think like every Bengali parents are like that or something. Like we grew up in a very curated kind of a thing. Like we have the access, but somehow we know there is this curation. Like like up to a certain age, I wasn't even allowed to touch. Like there was this Bunkesh books in my
home itself, but like I was like I used to like chupa ke padhte the, because as kids we aren't allowed Bhumkesh books because they're adult books. Bhumkesh books are basically adult books. So इसीलिए like everything was there. Although I didn't have a cable TV and all, घर पे class 12 तक कुछ नहीं था, DD1 and DD2. So basically मैं जब इधर उधर कहीं जाता था, I used to watch out things. But given the kind of environment I have grown up, and like surrounded by so much a plethora of literature, a plethora of good movies, हमेशा से like I've seen Charlie Chaplin वगैरह इतने बचपन में, thanks to my grandfather, like my mom's dad, who was like my inspiration for literature, movies, everything, बहुत चीजों में. तो उनकी वजह से I grew up with a lot of Hollywood movies. I grew up with a lot of good Bengali films, good Hindi films, good music. सब कुछ उनका बहुत एक मतलब impression रहा है मेरे ऊपर. So I would literally not like to change anything in which I have put up, because those things have helped me, made me what a part of at least what I am today. The thing that the fact that I'm able to talk about something also comes from those little bit. आजकल actually पढ़ने का बहुत कम time मिलता है, इसलिए आप मतलब like I join you people to read क्योंकि अलग से पढ़ने का time नहीं मिलता है. The time constraint has become such. Movie देखना is easier, पढ़ने के लिए you need peace of mind, you need a proper investment of time. नहीं मिलता है. तो बट बचपन में बहुत पढ़ते थे यार, बहुत पढ़ते थे. I have grown up reading comics. Tintin, like Tintin we have in Bengali, like, and it's such a delightful thing to read. मतलब Tintin Bengali में जब वो translate होके आता है, everything I becomes love very. to change the names and name of the dog in every language. In Bengali it is Kuttush. It is No, yeah, it is snowy, somehow became Kuttush. In French original it's Milou. Yeah. So like I've grown up reading this kind of literature, kind of comics and all. So कुछ नहीं बदलना चाहता. It should remain exactly as it is. At least in parts of this influence of literature and movies, जहाँ तक की बात है. Yeah, that's lovely. That's lovely. Shakti, what about you? So I would love to know what Shakti has to say, because like he has got the apparent or the actual chance to be like, what, I'll decide, I'll curate what you will watch. No, actually, I would not change anything about what I have seen, because I've actually seen a very varied type of content right from the beginning, right? Because I saw cable and television enter the Indian तभी तो हमारे पास CRT हुआ करता था. तो उस टीवी में देखा है मैंने लिटरली केबल को आते हुए, और हर किस्म का. So everybody watched whatever they wanted to watch, and we all had channels. उस टाइम पे हमारे पास वो टीवी था जिसमें आप रोल करके हर एक चैनल को you can assign a particular. So we would all have पहले नंबर का देखना है मुझे, DD1, DD2, Star Movies, Sony, Z, लोकल केबल. तभी एक TVC करके चैनल आता था जो बहुत कम वक्त तक आया था. उसमें सिर्फ इंग्लिश शोज आते थे और जो कभी दिखाई नहीं गए और अभी बाद में भी नहीं. मॉडल्स करके एक शो, my mother used to watch that. I watched Bold and the Beautiful with my mom. I didn't understand what was happening and I didn't get it. क्यों देख रहे हैं हम लोग? Bold and the Beautiful with Star World पे आता था. My mom used to watch. She doesn't understand English at all. लेकिन वो देखती थी, because उसको स्टोरी समझ में आती थी. She was like, yeah, Bold and the Beautiful देख रहा हूँ मैं. मेरे डैड के साथ रात को 8 बजे रात को 2 बजे 3 बजे क्रिकेट मैच उन्होंने चालू कर दिया कहीं पे. तब ESPN चैनल आती थी, तो वो देखना शुरू कर दिया. So I watched a very kind of variety in terms of content. जैकी चैन की मूवीज आती थी एक टाइम पे. रात को सैटरडे को इंग्लिश पिक्चर देता था केबल वाला, तो वो इंग्लिश फिल्म आती है. I would not change what I have watched as growing up, because it allowed me to just decide now what I want to watch. OTT maybe I would not really go and see, like I have not seen Breaking Bad. बहुत लोगों को बोलता हूँ. Me neither. मैंने क्या हुआ नहीं देखा तो यार, सबकी आंखें से बड़ी हो जाती है. हाँ, and I'm like नहीं यार, मैं छोटा करके एक सीरीज देखता हूँ, which is a fantasy series, anime fantasy series. I watch Ashes and Love, जो again Chinese fantasy series है. but तो कुछ भी उठा, because what I want to watch I'll watch, because now I have the choice to watch and it is literally on the palm of my hand. उस time पे I was shown everything that was available and it kind of gave me the true sense of variety. That is, I even watched fortune shows dubbed in English and I would think क्या क्यों देख रहा हूँ मैं. लेकिन then
I would get into it. I've watched कुसुम करके एक शो आता था टेलीविजन पे, सोनी पे, और कुसुम करके, तो I पहले 2-3 एपिसोड I hated. Kusum, I remember. Because my mother used to watch it, so but then I also got involved and invested in the story. क्या हो रहा है characters के साथ? And I love, exploring a story. That's something that I love. If I pick up content that I have not seen any time, मुझे character के साथ develop करना अच्छा लगता है. जब already कुछ बहुत famous हो जाता है ना, तो आपको इतना information download मिल जाता है उसके बारे में. Like Game of Thrones episode आया और लोगों ने डालना शुरू कर दिया. तो फिर वो पूरा exploration का मजा ही चला जाता है. You got to be completely offline. That is also something you guys were talking with Harshit in the last one. No? That Yeah. it's like if something comes and immediately all the opinion about that is out there. Reviews available. तो आप तो क्या कर लोगे फिर? अगर आपने Right. कुछ भी खोल दिया तो And no matter how much you want, you will be biased in some direction. It's human nature. You cannot avoid it, right? Sometimes you do it for the heck of it. Like अब क्योंकि सबने ब्रेकिंग मैच देखा है तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं देखना है बस अब नहीं, मैंने एक एपिसोड नहीं देखा. Nobody can force you. Correct. So it's also becoming like I don't want to get into things that I don't have the time to invest. For example, I don't read. I mean, I'll be honest. बहुत पहले reading छोड़ दी थी मैंने, and I don't feel the time to now invest in an entire book. Just don't. But do I feel that reading is not important? Like I have 2 kids. उनको मैं बोलता हूँ, I give them whatever content they can watch for their age. Once they start making their own call, I'm like, dude, watch whatever you want to watch, man. It's just तुम्हारा choice है, because ultimately you've got to live with that content. Or as somebody very rightly said that I didn't get influenced by के हाँ ये दिख रहा है ना तो मुझे भी ये करना चाहिए because that will make me look cool. वो कभी illusion नहीं था मुझ में, because that's a very dangerous path, Oh, TV पे दिख रहा है तो that's the cool factor. No, because I'm not that person. I will get into a story as what time traveler कहते हैं ना, like observation without interference. I will do that. I will not become part of the story. That वो नहीं करना है मुझे. That's how I kind of keep myself away from getting influenced by something that I watch and consume. रोने का तो I only first time I cried, I remember, was on Mr. India when Tina करके character ना छोटी. अरे यार हाँ. So like I was like, dude, ये नहीं हो सकता, because that scene, that whole, because उसको ऐसे build up किया था. पहला like almost crying was when they were hungry and she brings those samosas, right? So you feel that hunger, but when she dies, that sequence is not something. And now as a parent, if I watch it again now, I'm going to start howling only, because अब मुझे ज़्यादा एक relevancy अलग है ना मुझे. That time I used to watch and like, oh, small sweet girl died. Now it's like a child died. So that's a different connect that I have. Mr. India, I watched recently and I felt it's a bit dark for children, because एक तो मुझे मतलब मैं बोली ना ये पुरानी चीजें मैं बचपन में देखनी चाहिए थी वो मैं अब देख रही हूँ. तो मिस्टर इंडिया अभी जस्ट मैंने मानो 3-4 महीने पहले देखा. तो वो एक जो स्टार्टिंग में वो मोगैम्बो is like hypnotizing his men and they're jumping in the thing कि हाँ we are ready to die. Yeah, acid. I was like, this is like you're showing some kind of suicide to children. I don't think it's nice. Yeah, there's a lot of part in that. There's a hunger scene where everybody is hungry, पूरा family. बहुत कुछ dark है उसमें. I mean, it's the same guy who made Bandit Queen, guys. So yeah, let's not forget. एक और चीज मैं ऐड करना चाह रही थी about because Shakti was talking about the advent of cable TV and all. मुझे याद है, I don't remember which class exactly, maybe second class or something. हमारे घर पे पहली बार cable TV आया था, मतलब black and white था उसके पहले, ठीक है. उसके बाद we took this color TV. नहीं भाई, हम उतना क्या कहाँ जा रहे हैं. कुछ सैमसंग का LED TV लिया था हमने, ठीक है. तो I don't remember which class, या फिर उससे पहले normal color CRT वाला color TV जो भी था. The thing is cable आया था and I discovered Cartoon Network and मैं स्कूल से वापस आई, like after lunch आ जाते थे, morning school होता था, तो 1 o'clock to 6 o'clock continuously I watched cartoons for the first time. और पहला कार्टून जो मैंने कार्टून नेटवर्क पे देखा था वो मुझे अभी भी याद है. I watched the Smurfs, ठीक है. तो उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये सब पावरपफ गर्ल्स, डेक्स्टर्स लैब, ये सब तो आता रहता था, स्कूबी डू, ये सब.
बट वो मुझे पहला याद है कि और because the smarts I specifically remember because color TV, okay, and these are these little blue creatures, right? वो कलर इतना उभर के आ रहा है कि ब्लू क्रीचर्स है छोटे छोटे. So I was like, oh my god, यही तो चाहिए था मुझे लाइफ में, अब तक कहाँ था मेरे पास. So that I remember very vividly. But I also remember मतलब हम लोग सीरियल्स की बात कर रहे थे तो मेरा मुझे पेरेंट्स ने बोला कि I did not eat my dinner अगर सामने वो नहीं चल रहा हो, सास भी कभी बहू थी, अगर वो नहीं चल रहा हो, अगर वो गेट नहीं खोल रही हो, अगर बुला नहीं दे, I wouldn't eat food, like I just wouldn't eat food. I don't have any memory of it, but like I मतलब वो देखना जरूरी था मेरे लिए. And दूसरा चीज later in life was बालिका वधू. Like I have watched every, like till the point it did not get crazy. I think I've watched at least 4 or 5 seasons of it diligently, like with my mom. बालिका वधू I also used to watch. अभी वो repeat कर रहे हैं शायद किसी दूसरे चैनल. अच्छा. But like it's such an iconic show. I think one of the first shows that came on Colors as a channel. It came along with Khatro Ke Khiladi and 2-3 others, which was like the flagship show. Yeah. Yes. And मतलब उसका वो बैकग्राउंड म्यूजिक छोटी सी वो वाला, and उसका तो मीम वर्जन बन चुका है, अलग बात है, लेकिन like it's still so बहुत ही ज्यादा क्या बोल उत्तरायण. Oh yes, oh god, that was also there. मतलब Colors, when it came out, it was the coolest thing. I remember Colors पे एक show आता था which was like the launching of Yami Gautam. There was this show called I forgot the K से कुछ नाम था. तो that from that time only I thought यार ये लड़की कितनी सुंदर है, इसको movies करनी चाहिए. ठीक है, I forgot the name of the show. I'll find out. But बाकी I used to watch all this जस्सी जैसी कोई नहीं and लोगों को दिल मिल गया पसंद था. मुझे उसका प्रीवियस पार्ट पसंद था, संजीवनी. वो काफी सीरियस सीरियल था वो. दिल मिल गया थोड़ा मुझे झल्ला टाइप का लगता था. मिले जब हम तुम. I don't know how many of you have seen मिले जब हम तुम. Dude, I was a Tarak Mehta guy. I never Tarak Mehta. हमारे यहाँ तो कल्चरली देखना पड़ता था, मतलब कभी नहीं देखा तारक मेहता एंड आई एम सो ग्रेटफुल नहीं देखा. पागल हो क्या खराब है उसमें? I've seen parts of it. Like I never got hooked to it like Sarabhai. Like Sarabhai got hooked. मेरे को याद है कि कोई तो टॉपर थी, ठीक है, गुजरात की टॉपर थी या क्या थी, उसने इंटरव्यू में बोला था दैट आई वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड माय दादी वाज आफ्टर मी, तुम तारक मेहता देखो. एंड आई एम लाइक ये मेरा टीवी बंद करके चली जाती है इधर उधर घूम के, और मेरे को एक शो देखने के लिए फोर्स करे. मैं तारक मेहता देख के थोड़ी टॉप करूंगी. पढ़ाई करने बोलो, दादी इज नॉट टेकिंग द बेस्ट पार्ट. Yeah, but Anshika, I think it's your turn to speak. Please, yeah, go ahead. यार I would like to go back to our first question, क्योंकि मैंने ना बहुत सोचा कि फर्स्ट किसिंग सीन वाला क्या था, क्योंकि मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा. बहुत टाइम से सोच रही है. मैं सोच ही रही थी कि क्या रहा होगा ऐसा. देन मेरे को याद आता है कि so मेरे मम्मा पापा ना दोनों के दोनों उस टाइम के सिनेफाइल है, तो मैं जस्ट अपना मतलब धर्म निभा रही हूँ अभी. सो मेरे पापा लाइक उनके पास काफी सारी डीवीडीज होती थी, और वो लाइक एवरी सैटरडे और किसी दिन रात में वो फिल्म्स लगाते थे. तो ये बॉबी फिल्म थी ना, लाइक एक एंड वो फिल्म थी, और उसमें एक किसिंग सीन था, और मेरे पापा मेरे को सुलाने लगे थे उसके पहले, क्योंकि उन्होंने पहले देख रखी थी. को सुलाना है वो भी पता हो कितना टाइम लगेगा. अब तो तुम सो जाओ, हम खाना वाना उसके पहले निपटा के वो सीन के पहले कि अब ये सो जाएगी. एंड मैं अपनी मम्मा के साथ देख रही थी सत्यम शिवम सुंदरम, और वो फिल्म मेरे को अभी भी बहुत पसंद है. लाइक एक्चुअली मेरे को आज भी वो फिल्म बहुत पसंद है. मैंने एक पैरेलल भी लिखा था, सिर्फ जस्ट एज अ लूजर, एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स के साथ, तो उसके साथ मैंने एक पैरेलल में लिखा था, बिकॉज
ब्यूटी को लेके था और लाइक एक डार्क को लेके था, तो बहुत ट्रॉमेटिक भी थी, बट इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. सो किसिंग सीन मैंने यहाँ पे देखे थे. क्राई सीन मेरे को याद है कि मासूम मासूम में एक सॉन्ग है, दो नैना एक कहानी, वो मेरा और मेरी मॉम का फेवरेट सॉन्ग है. वो पार्ट भी मेरा, और मेरे को ना ऐसा अचानक सा लगने लग गया था कि मैं अडॉप्टेड तो नहीं हूँ. तो मैं रिलेट विलेट करके रोने लग गई थी यार. ऐसे. और कुछ कुछ होता है तो यार वो मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया. आई एम बोर्न इन 98, तो मैंने कुछ 2-4 साल बाद देखी, तो प्यार क्या 4 साल के बच्चे को क्या ही प्यार पता होगा. अगर लेकिन 98 में ही कुछ कुछ होता है, देखो देखी हो तो किस वजह से रो रही होती समझ नहीं आता. But guys, we all would agree that Aman deserved better. हाँ. Yeah. अंजलि डिजर्व बेटर. अंजलि खुद ही गधी थी, मतलब वो उसका चॉइस था, जाने दो उसको. यहाँ पे नहीं, फिर आई कैन नॉट बिहेव प्रॉपर्ली. ओके ठीक अंजलि है, डिजर्व अगली बार करो. सो हाँ, वो मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी. एंड उसके बाद वो जो सॉन्ग आता है ना, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, गीता कपूर. बहुत रोई थी मैं. DDLJ में अमरीश पुरी की शक्ल देख के मैं बहुत रोई थी. तो बाबूजी छोड़ क्यों नहीं रहे, तुम छोड़ दो ना आप उसको. Dude, that guy played a dad for over 20 years in good and bad films and in iconic films. And then in a film he got to marry Priyanka Chopra. अमरीश पुरी से ना मेरे को डर लगता था यार बचपन में, बहुत डर लगता था. Understandably. हाँ, मुझे डर लगता था कि यार ये आदमी है बहुत खतरनाक. और मैं बता रही हूँ ना कि मेरे को बहुत लंबे टाइम तक ये समझ में ही नहीं आता था कि ये कैरेक्टर्स रियल है और मैं टीवी पे देख रही हूँ क्या चल क्या रहा है. शुरू वाला फेज तो मुझे सब लगता था ये सब असली के आदमी है और ये है ही ऐसे. और अमरीश पुरी ने तो किया ही ऐसा अपना कर. मैं किसी एक पार्टी देखी मैंने बाद में, तो मेरे को समझ में आया कि नहीं नहीं, इस आदमी ने ऐसे काम किया है. अच्छा कैरेक्टर. So yeah, that's all I wanted to say. Amazing. Shafali, please go ahead. Yeah. Also, like with Shafali and with any last points that people have, we can wrap up the conversation thereon. Yeah. Yeah, Shafali. Yeah, as you were talking about what would you like to change about while we were growing up. तो ऐसे कोई regrets नहीं है, but I would say कि हाँ, अगर बुक्स का ज्यादा एक्सेस होता तो वो मैं ज्यादा प्रेफर कर पाती, बिकॉज तब ऐसा होता था कि हमारे पास में सिर्फ ऑप्शंस थे कॉमिक बुक्स के. चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, ये बहुत पढ़े हैं. तो पर एक्चुअल जैसे किताबें पढ़ते थे. मेरी फ्रेंड थी एक, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो वहां पर तो लाइब्रेरीज होती नहीं थी. होती थी तो मराठी होती थी, मोस्टली मराठी, ओनली मराठी लाइब्रेरी एंड अडल्ट बुक्स फॉर अडल्ट पीपल. बच्चों के लिए कहानियां या बुक्स नहीं होती थी, रेयरली होती थी. एंड माय फ्रेंड, उसके लिए उसके पेरेंट्स एक्चुअली मुंबई, पुणे, नागपुर से खरीद के देते थे. नेक्स्ट बोरो फ्रॉम हर. मेरे पेरेंट्स को लगता था कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी कि एक्चुअल बुक खरीदना. तुम पढ़ लो ना, उससे प्रियंका से बोरो कर लो और पढ़ लो. तो आई यूज्ड टू रीड फेमस 5 एंड हैरी Any पॉटर Blyton books, oh my god, yeah. या बट ये बोरो करके, हैरी पॉटर भी बोरो करके पढ़ी हुई हैरी है. पॉटर में सारे बोरो करके. एक सारे हमारे बोरो क्लास में करके एक पढ़ी लड़का है. था, उसका कोई अंकल तो था यूके में, और वो भेजा करते थे और क्लास में सब लोग उसी के बुक्स पे टूट पड़ते थे, जिनमें मैं एक थी. आई नेवर बॉट अ सिंगल. और जब वो एक्चुअल पहले लॉन्च होती थी बुक्स, तो वो न्यूज में आता था कि आज ये 6th बुक लॉन्च हो रही है या 5th बुक लॉन्च हो रही है. और जैसे वहां पे यूएस में या यूके में बताया जाता था कि बाहर बच्चों की भीड़ है एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर द बुक. और हम लोग 3-4 दोस्तों का ग्रुप था, वी वर हैरी पॉटर फैंस. तो वी यूज्ड टू फील वेरी वेरी सैड, वेरी बैड कि हम लोग वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. तो वो एक पार्ट हाँ शायद मैं चेंज करना चाहूंगी कि बुक्स एक्सेस ज्यादा रहता तो बेटर रहता. बाकी ये ज्यादा, आई वाज बोर्न इन 1990, तो वन ऑफ द बेस्ट इरा इन टीवी शोज लाइक श्रीमान श्रीमती जी है, तू मैं है. आई यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ दिस. ऑफिस बहुत देखा है क्योंकि डैड इंसिस्ट करते थे. काफी फनी होता था. बहुत सारे हंसी
कवि सम्मेलन आते थे जो मेरे पेरेंट्स बहुत पसंद करते थे, तो वो मैं देखा करती थी। इवन कार्टून नेटवर्क, जैसे वसुंधरा ने भी कहा, इट स्टार्टेड विथ पावर ऑफ गर्ल्स एंड डेक्स्टर्स लैब, या फिर सोनी पे बूगी वूगी आता था। चीजें, हाँ, बूगी वूगी लाइक फर्स्ट रियलिटी शो, डांस शो, एंड इट या इट वाज वेरी हैपनिंग, एंड ऐसे नकली नहीं लगता था वो। इवन डिज्नी के कुछ कार्टून्स आते थे लाइक टेल स्पिन्स और अंकल स्क्रूज वगैरह, और वहां पर एक आखिरी में एक सेक्शन होता था कि डिज्नी में वो एक एक पर्सन था जो कंडक्ट करता था, विशाल और समवन, he was 16 17 years, and they used to ask for drawings pictures कि आप ड्राइंग्स या पिक्चर्स आप ड्रॉ करो और आप डिज्नी को भेजो, एंड दे विल फीचर सम ऑफ देम। तो मैंने 2-3 भेजी थी और कभी मेरी फीचर नहीं हुई, आई यूज्ड टू वेट एंड क्राई। तो मेरे पेरेंट्स ने एक बार बोला भी था, तू घर पे नहीं थी, हाँ, तेरा दिखाया गया था, तूने जो ड्राइंग झूठ भी बोला गया, बाद में पता चला कि झूठ बोला गया था करके। तो हाँ, चाइल्डहुड तो अच्छा ही गया, बहुत सारी चीजें कि माय मॉम यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट कि मैं क्या कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ मूवीज के रिगार्डिंग। शी वांटेड टू, अब जैसे अब मैं बात करती हूँ उनसे तो पता चलता है कि शी वांटेड टू सिक्योर, यानी मेरी मेंटल हेल्थ सेफ रहना चाहिए, तो मैंने वैसी मूवीज नहीं देखनी चाहिए। बट स्टिल मैंने चुपके चुपके बहुत मूवीज देखी है, जैसे एक मराठी मूवी है देवराई, इट्स अबाउट, it's like a not documentary, but it's like a study on schizophrenic patients. तो उसके बारे में मम्मी काफी बात करती थी मेरे डैड के साथ में कि ये मूवी है एंड इट्स अक्लेम्ड मूवी एंड वगैरह वगैरह। तो एक बार मूवी टीवी पे चल रही थी एंड शी वाज अस्लीप, तो मैंने देवराई देखते हैं, मुझे पता था ये मम्मी मुझे देखने नहीं देगी बिकॉज आई वाज वेरी यंग टू वॉच दैट। तो मैंने ऐसे चुपके चुपके काफी मूवीज देखी है जो तब मेरे लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं थी। देवराई हो गई, which yeah traumatized me a little, but बाद में अभी समझ में आता है उसका सिग्निफिकेंस। एक एक आई थिंक, आई डोंट नो मराठी मूवीज किसी को पता होगी या नहीं, एक तात्या विंचू करके मूवी है, उसमें एक बहुत ही क्रीपी सी डॉल रहती है जो बात करती है एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी फेमस मूवी यार, मराठी मूवी। तो हम एंड थोड़ी मराठी हैं हमें तो नहीं पता नहीं नहीं। नहीं, आई एम नॉट सेइंग नहीं नहीं, मराठी, बट but I've heard. इट वाज डब्ड इन हिंदी आल्सो। और एनाबेल को यार पीछे छोड़ दे, ऐसी इतनी क्रीपी डॉल है उसमें। तो या इट वेरी ट्रॉमेटाइज्ड मी, इसलिए मेरी मॉम मुझे बहुत रेस्ट्रिक्ट करती थी ऐसी मूवीज देखने के लिए। वो एक्चुअली किड्स मूवी ही थी, बट हाँ बहुत तब के लिए बहुत डरावनी थी, अभी कॉमेडिक लगती है। ऐसे काफी सारे शोज है, तो आई डोंट रिग्रेट वाचिंग ऑल ऑफ दैट, द लर्निंग करिश्मा एक्सपीरियंस। का करिश्मा देखा है, उससे पहले मैंने स्मॉल वंडर देखा है। स्मॉल वंडर देखा है यार, स्मॉल वंडर वाज द, स्मॉल वंडर देखी हो तो करिश्मा का करिश्मा लगेगा रे। ठीक, नहीं, करिश्मा का करिश्मा नहीं लगा, क्योंकि स्मॉल वंडर वाज वेरी लाइट हार्टेड, वेरी स्वीट, वेरी क्लोज टू हार्ट। नहीं थे। हाँ, गाइस शरारत। किसी ने हीरो देखा है? हीरो कौन सा भक्ति हीरो? शक्ति है। हाँ वो वाला हीरो मेरा की क्या भाई बात देखता है, था, माँ दुर्गा दुर्गा माता की किसके शक्ति। साथ है। आई यूज्ड किसी टू ने लाफ, अरे माय ब्रदर यार यूज्ड टू वॉच इट। क्या किसी ने कर्मा देखा है? कर्मा मूवी? क्या है? नहीं नहीं, कर्मा कर्मा एक ऐसा सुपर हीरो सीरीज था। सुपर हीरो सीरीज था। उसमें ऐसा था कि वो सात सात तारों के ऐसा कुछ से बना था, तो उसके आपने उसके आगे अगर 8 बनाते ना तो उसकी शक्तियां कम हो जाती थी, ऐसा कुछ था। तो 7 से बड़ा नंबर 8 होता था। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व वाह, देयर। अरे बहुत कुछ आता था। यार हॉरर हाँ, में कितना अच्छा आता था। आप बीती, और एक एक तो पता आहट। आहट क्या था, आहट आहट। एक और था फीवर हॉरर में यार, फाइल्स मेरे को याद है वो कोई है, और कोई एक है भी था, एक और था जो दी वो हॉरर। भूत अंकल टाइप का था और खूब सारे बच्चे थे उसके साथ। भूत और अंकल। नहीं, और वो ऐसे वो छड़ी मूवी है। घुमाता था और फिर वो गायब हो जाता था। यार बहुत अच्छा था, मैं अभी ढूंढ के बट बताती हूँ। भूत अंकल बाय द वे आल्सो इज अ ब्रिलियंट फिल्म। हाँ। लाइक हाँ, आई मुझे उस फिल्म से पता चला कि रसगुल्ले कैसे खाते हैं। मैं तो बस उसको ऐसे चम्मच से खाता था, उसको पूरा निचोड़ के फिर खाना। अच्छा, बट तो मुझे मजा रस, नहीं आया बिकॉज हाँ मुझे वो चाशनी वाला टेस्ट चाहिए भाई। तो मैंने उसका फॉलो बहुत टाइम पहले किया था। आई यूज्ड टू फॉलो अर्लियर बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इसका तरीका गलत है। बट लाइक आई लव भूत अंकल फिल्म। आई ऑल्सो लाइक किसी ताकेशी कासल अभी तक बोला नहीं,
मतलब Yeah, right, exactly. Yeah. यार How could we पोगो miss that? कितना सही चैनल था. है ना? मैड याद है, मैड याद है, अभी भी बंदा डालता है, इंस्टाग्राम पे हाँ, डालता है. Insta पे stories डालता है डालता Rob. है. Rob. हाँ, He looks the same यार, he did not age. हाँ exactly the same. Even ये Javed था Jafri is so good looking even today. करेक्ट. पोगो Javed बहुत Taqi Jafri कैसे is a भूल brilliant गया? dancer. Javed Jafri is a brilliant dancer. Brilliant dancer, अब तो ऐसे ही voiceover नहीं artist. YouTube पे. ये एक मूवी थी 100 Days with माधुरी दीक्षित. उस जमाने की क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर. थ्रिलर मूवी थी वो. माधुरी हाँ. दीक्षित, जैकी श्रॉफ. माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ. 100. सस्पेंस में It's a brilliant film. It's a brilliant film. Like given के वो 90s में बनी थी, मतलब हाँ. I haven't seen it. 100 Days, मतलब देखना. It's a brilliant film. It's a मैंने thriller. शायद 90s की अभी तक 5% मूवीज देखी होंगी. But still, I think Ongoing, 90% चल of रहा है. what happened in 90s was shit anyways. So 5% is good. ये अभी एक्चुअली यार बसुधा आई टॉक थिंक अबाउट गानों दिस. के लिए लोग देखते थे. Yeah. हाँ Exactly. You know, like हाँ mostly ऐसा होता था, क्योंकि हम लोगों ने भी ना, मतलब कुछ होता है. इवन कहो ना प्यारे, मैंने बासु तुझे भेजा था ना वो कैसेट का फोटो. हाँ, कौना कहो ना प्यारे का प्यारे. कैसेट हाँ. वाला. तो वो कैसेट ना, वो मतलब आई रिमेम्बर स्टिल, लाइक जस्ट पुटिंग द कैसेट एंड डांसिंग. मतलब सिर्फ गाने पे, लाइक जस्ट डांस कर रहे थे घर में रैंडम, जब कोई नहीं है घर पे, मतलब ऐसे थोड़ा. तो वो लाइक 90s के गाने यूज्ड टू बी अ मेजर अट्रैक्शन फॉर मूवीज, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे इतना मैच्योरिटी नहीं था कि वो वेरी लस्टफुली एक लड़की का हाथ पकड़ कर दूसरी लड़की को खींच रहा है. तो दैट इज नॉट अ, मतलब उसे कैसे आइडिया होगा यार 5 साल के बच्चे को कि क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, जो दिख रहा है ठीक दिख रहा है, अच्छा लग रहा है. तो दैट इज व्हाई थिंग्स, यू नो, लाइक 20 years later, when even they look back into the film, Shahrukh even makes a comment कि I wouldn't like to set such an example for my son के when I'm doing such a thing, right? But वो उससे पे था जो था. तो I mean, it's not too... Even दिल से, I mean, I loved दिल से जब पहली बार देखी, छोटी थी तो. और अभी कुछ साल पहले मैंने देखी, आई थिंक लॉकडाउन में, तब समझ में आया कि ही इज अ स्टॉकर एक्चुअली. दिल से काफी क्रीपी है. हाँ. यानी जब पहली बार देखी थी तो आई वाज लाइक, यार क्या मूवी बनाई है मनी रत्नम ने, एंड सच अ गुड मूवी वगैरह वगैरह. बट इट्स जब वेरी एस्थेटिक, लेकिन उसके पीछे बहुत क्रीपीनेस है. हाँ, या बाद में जब देखी है ना, शायद लॉकडाउन में ही देखी थी मैंने फिर से, तो आई रियलाइज कि ही इज एक्चुअली अ स्टॉकर. उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है. Yeah. Harsh, please go ahead and we'll wrap up with you. Please go ahead. Yeah, so actually अभी Basundhara talk about this movie ना, वो ऐतराज की बात करी आई गेस. उसमें she talked about अमरीश पुरी got to marry Priyanka. हाँ exactly. तो उससे ना मुझे याद आया one of my most favorite suspense movies of all time, and you guys have watched this, Ajnabi. Oh, I love Ajnabi. भाई साहब वो मूवी लाइक इट वाज, वो आई लाइक बॉबी देओल का सबसे मुझे बेस्ट रोल लगता है, तो आई थिंक वो अजनबी मूवी है. नहीं भाई, उसका बेस्ट रोल मेरे हिसाब से अपने में था. फॉर मी अपने इज अ ब्यूटीफुल फिल्म. नो उसका बेस्ट रोल है श्यामला पगला दीवाना. दैट टू, लाइक दैट टू, ऐतराज क्लोज के बारे में सेकंड. बात कर ली ना. Yeah, so all those films. But yeah, on the song part also I would like to add one thing, like कुछ songs ऐसे like they will stay with me till my last breath. जैसे अभी मैं इधर एक आइसक्रीम पार्लर में था, तो वहां पे एक रीमिक्स वर्जन बज रहा था जीना सिर्फ मेरे लिए का, एंड आई वाज लाइक, वो उस वक्त पता नहीं दिमाग में बैठ गया है वो सॉन्ग जीना सिर्फ मेरे लिए. आई डोंट नो व्हाई बट इट जस्ट स्टेड विद मी. फिर ये जाने दिल में कब से है, तो मुझसे दोस्ती करोगे के, उसके सारे सॉन्ग. सो लाइक दीज सॉन्ग्स दे आर लाइक उदित नारायण के सॉन्ग्स है काफी, दे विल जस्ट स्टे विथ मी फॉर माय लाइफ. लाइक या जीना सिर्फ मेरे लिए मूवी का नाम, मुझे मीनिंग समझ नहीं आता था बचपन में. ये कहना जीना सिर्फ मेरे लिए, मरना सिर्फ तेरे लिए, मतलब कहना क्या चाहते हैं. मेरे इट्स लाइक जीना इज अ क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन कि तुम सिर्फ मेरे लिए जीना. दैट इज व्हाट इज सेइंग. इफ यू रिमेंबर जीना सिर्फ मेरे लिए मतलब मैं सिर्फ मेरे लिए जी रहा हूं. मैं कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम. स्टोरी ऐसी थी उसकी कि वो बचपन में साथ में होते हैं, दे वर लाइक किड्स, वेल दे वर किड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स. फिर वो बिछड़ जाते हैं, तो ये सॉन्ग बजता है कि तुम मेरे लिए जीना, ऐसा जब जहां भी जाओ यू लिव फॉर मी, ऐसा करके.
भाई बहुत प्रेशर है. मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? सही बात है. But like I would like to wrap up with one last question, not exactly question, but one last thought. What is that one obscure thing that you think you have watched as a kid? Could be a film, could be a show, could be anything. जो आपको लगता है बस आपने ही देखा है, या फिर मतलब आपको लगता है कि यार ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं है? Like, is there something that could Define be obscure. very obscure? मतलब obscure as Lyrically in obscure. not like lyrically obscure, but just obscure. मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ, I think I have answered that. define I obscure. Yeah, मुझे you तो- have. Yeah, Yes, yeah, yes. I have The watched schizophrenia Devrai. documentary. But it's not a documentary. It stars Atul Kulkarni in it, and So he's it's a schizophrenic. docudrama kind of thing based on Yeah. real events. It's Devrai, and not many I'll check people it know out. about it. Yeah, not many people know about it. Devrai 2004, right? I just googled it out. यार नहीं याद है, but Devrai. हाँ, मतलब अतुल कुलकर्णी है. It's हाँ, a अतुल director. कुलकर्णी है. Women directors. I think so. अमृता सुभाष है and अतुल कुलकर्णी है दोनों Right, उसमें. right. It's on Prime. Okay. हाँ, Oh, संकल्प. it is on Prime. I'll watch it again. Define obscure थोड़ा सा. Yeah, exactly. Not So digressing. in the sense that okay, I'll give my example. There are two animated films that I feel like only I have watched. Like I know there are more, but Jumbo is a film that I The elephant absolutely one. loved. Yeah, the elephant one with Akshay Kumar and Javed Jafri. Sorry, Gulshan Grover as the villain, villain's voice. And that film is genuinely so well made, such a wonderful coming of age story, and also like has a bit of Hamlet wala or other people Shamshera wala reference thoda sa of your regaining your father's this thing uske upar pura. But it's the songs, the background music, the emotion of it is so well done. I think Jumbo is genuinely a wonderful film. And the other film like this is अर्नब किससे बात कर रहा है क्या? अर्नब What happened? अर्नब is talking क्या? No, no. अच्छा, no, I thought अच्छा he was somewhere else. वो अच्छा, अपने sorry. zone में रहता है. हाँ वही. And the other one is another animated film called चिड़ियाघर. चिड़ियाघर था शायद उसका नाम. This is not there was a show also चिड़ियाघर. I'm not talking about that, but I'm talking about an animated film called चिड़ियाघर, which was also wonderful. It related like मतलब कंस्ट्रक्शन के जैसे लोगों का घर मतलब सर ये एनिमल्स का वो शेल्टर ले लिया जा रहा है. And they decide to go to the prime minister of the country, all the animals of that particular place, and tell them कि ये गलत है करके. So it's another, and like उसमें prime minister मनमोहन सिंह था, उसको दिखाया पूरा, and मतलब I love that film. So like these are two obscure films that I think मैंने ही देखी है for some reason I feel. Yashubham, you have raised your hand. You want to say something? हाँ, I mean just बचपन का प्यार and music वाले part में this was the thing, Backstreet Boys. Oh. मैं अभी तक इसका वो कैसेट की तुम लोग बात कर रहे थे ना, मैं अभी भी वो पहला कैसेट ऐसे रखा हुआ. Oh And my God. I was like die hard ये कौन सा वाला? die hard fan of Nick Carter यार. Nick Carter बहुत smart लगता था मुझे. इतने सारे बैंड मेंबर्स थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया. I think 5 ही थे. And उनके वीडियोस काफी अच्छे लगते थे, मतलब हॉरर एंड ऑल सब कुछ ऐसा. But yeah, talking about obscure film, again Shah Rukh Khan makes an entry into my life, and I watched Maya Mem Saab. बचपन में Oh, Maya Mem it's Saab very देखा. obscure. as scandalous as watching murder. Yeah. ये क्या सारे M वाले मूवीज का क्या चक्कर है भाई? Right. मैं ऐसे मतलब अच्छी लगी मेरे को, मतलब अब उस समय इतना मतलब शाहरुख खान पसंद ही था तो मुझे अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी आर्टसी मूवी लगी. एंड देन आई सॉ द बैकलेस सीन ऑफ शाहरुख. क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ मैं, एंड समथिंग लाइक दैट. बट स्टिल आई मीन माया मेम साहब पता नहीं, आई मीन आई एम हैप्पी टू नो दैट बहुत लोगों को मालूम है उस मूवी का नाम. लेकिन मैंने I think I started watching on Netflix at one point, but अभी शायद Netflix पे है नहीं वो. I didn't उसका finish ending it. से समझा ही नहीं था शायद, मैंने हाँ. 2 बार देखा. हाँ, बट पता नहीं काफी मतलब काफी आई वाज वेरी मच ग्लूड टू द मूवी. मतलब
डिप पॉइंट भी आ रहा था ऐसे जा रहा, तो मेरे को छोड़ने का मन नहीं करता, मुझे कि यार इसका अंत तो देखना है मुझे, मतलब वेयर डज इट एंड, ये कहाँ जा रहा है। एंड अब शाहरुख खान के इलस्ट्रेस करियर में अपना ऐसे नहीं देखो कि माया मेम साहब जैसी भी मूवी है कोई, but still I mean Maya Memsav made it to my list of obscure movies. Great. What about Basundhara? Anything that comes to your mind? Yeah, so actually the very first movie I watched in the theater, first like life का first, even before Titanic, एक वाटर वर्ल्ड करके एक मूवी थी, जो उसके बाद ना मैंने किसी से जिक्र उसका सुना है, ना मुझे उस मूवी के बारे में कुछ याद है। बस ऐसे कुछ पता नहीं, वो भी वाटर वर्ल्ड मतलब वो ये यही होता था मेरे साथ कि पानी में जहाज जा रहा है, इसी टाइप की मूवीज मैंने देखी होगी बचपन में। तो अभी मैंने गूगल किया, उसको कुछ एकेडमी अवार्ड फॉर साउंड मिक्सिंग मिल रखा है, केविन कॉस्टनर है उसमें, ठीक है। और एक बचपन में एक मूवी देखी थी जो कि बहुत पुरानी 1965 की मूवीज है, इट्स कॉल्ड दोज मैग्निफिसेंट मेन इन देयर फ्लाइंग मशीन्स, जिसमें इट्स काइंड ऑफ इट वाज अबाउट लाइक रेस बिटवीन पीपल मेकिंग देयर ओन एरोप्लेन्स। तो इट्स लाइक राइट ब्रदर्स वाला इंस्पिरेशन लेके, मतलब उस टाइम एरोप्लेन्स बन गए। I think I don't remember, but it's like you make your own aircraft and you fly it. It was some kind of stuff like that. तो ये कुछ उस टाइम पे कुछ मेरे पापा के कोई तो कोलीग थे, and she used to give these पुरानी movies के DVDs, जिससे I also got to watch some Audrey Hepburn movies and stuff. तो ये नाम मैंने और किसी से कभी सुना नहीं है। वाटर वर्ल्ड तो बिल्कुल नहीं, बट सिंस that was the first movie I ever watched in the theater, I remember it. Waterworld doesn't sound like a film, it sounds like a theme park, like a water kingdom. Yeah, like some ad being played. Aquatica. Yeah, exactly. वाटर वर्ल्ड का सिनॉप्सिस सुनाती हूँ। The polar ice caps have melted down and most of Earth is underwater. In this situation, a mutated mariner fights starvation and reluctantly helps a woman and a young girl find dry land. तो मतलब डूब रहे हो, तुमको ड्राई लैंड ढूंढना है, ये है वाटर। उसमें भी उसको लड़की मिल गई। दो लड़की, एक वुमन और एक यंग गर्ल। हाँ, ये था। Yeah, there are three pies in this life. Sorry, story. Arnab, yes, please. किसी ने बेब द पिग करके एक मूवी है, सुना है कभी? मतलब अच्छा चलो यार, मतलब ये भी ऐसा है, बहुत कम लोगों ने सुना है। आता था आई थिंक काफी। अच्छा, ये मेरी पहली थिएटर में मूवी थी when I was very young, and that is the only one film in my life which I have gone with my father, the first and the last. उसके बाद like my father doesn't go to movies, तो उसके बाद तो वही एक फिल्म थी जो मैंने पापा के साथ किया था, and that was the first film. तो बहुत कम, मैंने उसके बाद वो मूवी नहीं देखी। I just remember a scene last में, somehow I remember, I don't know, last में वो एक कुछ competition होती है and the pig wins, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब मतलब इतना क्लियर याद भी नहीं है। बिकॉज यू आर टॉकिंग एक्चुअली ऑब्सक्योर, मुझे ना मतलब ऑब्सक्योर एज लाइक थोड़ा सा वियर्ड ऐसे मूवीज याद आ रहे थे। तो आई हैड सीन दिस अगेन दिस बंगाली फिल्म एक्चुअली which stars actually Konkona before she was Konkona, like this Konkona we know. There's this film called Agja Chekonna. I think it was the first movie, no? हाँ, exactly. Yeah. मतलब she was it was like in her early college or pre-college days. She was not into movies still at that point. Just like she was casted into it somehow, and it's a kind of a creepy story. उस point पे से देखो तो मतलब अभी तो like I can understand, like she's done the part so beautifully. Like she gets obsessed with some older man. Yeah. Sabyasachi plays this older man, and she is like very obsessed with this older man, and she does like hell, ऐसे साइकिल तोड़ देती है, and it's a काफी good film, but बचपन में क्या ही चल रहा है, क्यों कर रही है? This older man is sleeping with other girl, like he has a proper girlfriend and everything, and this girl is like रात में नीचे बैठे नींद खराब कर रही है, पत्थर फेंक रही है उसकी बालकनी में. He comes as a tenant to live in their house, ऐसा कुछ. मुझे वो उस टाइम बहुत creepy लगा था, मुझे याद है, like even watching it as a Anshika, what about you? यार
मेरे को नहीं पता, सबने देख ही लिया होगा अभी तो, मेरे को ऐसा लगता है, बट देयर इज दिस मूवी उर्मिला मातोंडकर की कौन. कौन? सो मेरे को ना उर्मिला लाइक रंगीला हैज इन्फ्लुएंस्ड मी एज अ चाइल्ड. मैं बोला कि कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं आया, बट जो कैरेक्टर्स ने प्ले किया था ना, मतलब इतना सपने देखने वाला. तो मैं भी रात को 2-2 बजे तक उस टाइम पे भी जग के सपने ही देख रही थी उर्मिला के जैसे रंगीला में. तो मैंने उसकी मूवी देखी थी कौन, और मैंने देखी थी रात में. Not a और good idea. मुझे याद है कि मेरे माँ बाप मेरे को छोड़ के कहीं गए थे कि सो गई है ये, और उनका कोई पार्टी शार्टी था, और फिर मैंने देखी कौन. और मेरे को वो मूवी इतने अच्छे से याद है ना, मैं अभी भी लाइक अभी मैंने रिसेंटली गौरी को Especially climax जब होता है उसका. है ना, एंड उसमें मनोज बाजपेयी भी है. सो बहुत सही है यार. It's scary. स्कैरी It's an बहुत scary. effing. अभी भी लगता है. आज No, It's an you know, effing. I think अभी मुझे वो स्केरी जो जंप स्केयर्स वाली चीजों, मतलब भूत वाले चीजों से ज्यादा स्केयर ये लगता है क्रीपी लोग. You know, कोई तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां पे खड़ा हुआ है. All these things. क्योंकि और वो एक रियल लाइफ में और- हो सकता है. I don't हाँ, expect a exactly. ghost to jump out right now, but that thing can happen. कौन वाला थिंग कैन हैपन. एंड देयर इज अनदर मूवी शबाना आजमी की मकड़ी. हाँ, मकड़ी. मकड़ी भाई साहब, उसमें मकड़ी मुझे रिवॉच करना है. हाँ, पप्पड़ वाले पंगा ना ले, झापड़ लगेगा पंगा ना ले. ये थप्पड़ लगे. हाँ, ऐसा कुछ था. मैंने बचपन में देखी है और बहुत मजेदार. लाइक आई हैव क्रेजी मेमोरीज. मैं बहुत नाचती थी उस पे, और वो शबाना आदमी से डर भी जाती थी मैं. नाखून उनके, बाप रे. हाँ. It used to और drink मेरे को blood. मुर्गी काट के खून पी. मुर्गी का खून. खून पी जाती थी. और मेरे को ना बहुत लंबे टाइम तक पता नहीं था कि दैट इज शबाना आजमी. मैं बहुत बड़ी हो गई उसके बाद मेरे को लाइक एक बार मैं उनकी फिल्मोग्राफी देख रही थी, एंड आई एम लाइक वो मकड़ी में थी. तो she So, like, was in a completely different look and मतलब थोड़ी मोटी भी बन गई थी उस Yeah. रोल से. हाँ, so like all these things. तो मैं बहुत creepy चीजें देखती थी यार बड़े हो. ये भी देखती थी मैं चुप चुप के. तो मैं यही मैं 10-11 साल की उम्र में रात को अकेले बैठ के एग्जॉर्सिस्ट देखी हूँ. मेरे पेरेंट्स हो गए थे. यार मैं देखता था छुप छुप के Fear Files सीआईडी देखा क्राइम है. पेट्रोल. मैं सीआईडी क्राइम पेट्रोल देखा है मैंने. मैं मैंने अलाउड ही नहीं था मेरे को. चुपके से निकल के फियर फाइल्स, लाइक मैं फियर फाइल्स बहुत देखती थी. पता नहीं क्या मजा मिलता था मेरे को उसको देखने में. आजकल लोग ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनते हैं उसकी जगह पे. वही चीज चल रही है. हर्ष प्लीज विल रैप अप. प्लीज गो. Yeah. So मैंने मोस्टली जो सब चीजें ऐसी देखी है जो you guys have watched already. But is like मेरे मामा जो है वो he is a fan of गुजराती नाटक. अरे So हाँ, so he used to watch a lot of this नाटक. Okay, so इसमें एक नाटक है, if you have heard of this, by मारी boundary. It's very famous नाटक in Gujarati. No, if you guys know, there's a movie of Sarman Joshi and Rekha called Super Nani. Super Nani is inspired from that Gujarati play actually. By Mari Boundary, and it's so funny, literally legit funny. And then उसका पूरा वो भी है, मतलब उसका फेमिनिज्म वाला एस्पेक्ट भी है उसपे, बट लेजिट बहुत बढ़िया. एक्चुअली आई विश कि अगर सब लोग देखे whenever you get some time. बहुत फनी है वैसे, मतलब मजा आएगा. एंड देन इट्स रियली नाइस. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग आई थिंक which I watched and I would like others to watch as well. Great. Thank you for suggesting that. I think I have watched Super Nanny. I think that was the phase I watched everything by Sharman Joshi, because like it for me मेरे लिए उसके लिए वो हो गया था. After watching Ferrari की सवारी, I was like यार ये बंदा बहुत बढ़िया है ये बंदा. I love him. So I watched Super Nanny also at the time. I watched, what was that film? That was the third part of some franchise. Some Hate B-grade Story. franchise. हाँ, Hate Story. Yes, Hate Story 3 में था वो पूरा बॉडी बना के. मैंने वो भी देखा था. I was like, I want to support this guy. Maybe he'll do a good film someday. And still waiting for that to happen. But even he also did 1920 का third या fourth part. I remember. So, Have you watched Ferrari की सवारी? it's a lovely film. First, but I think it's good, no? Yeah, it's very That's good. It's another very good. one. Could be my obstacle. Genuinely very good. Yeah, genuinely very good. Yeah. But as a yeah. last Please. note, एक song आप
I would like to give everyone to Haim too. मेरे मामा actually सीरीज में ना एक he was a fan of Adnan Sami also. Okay? तो लिफ्ट करा दे की सीडी भी उनके पास थी and I used to like dance on that song. ठीक है. So yeah, वो बचपन का प्यार में I think लिफ्ट करा दे is somewhere on top. मैं अभी भी That album, the whole album was awesome. Yeah, So genuinely. But like that's a good note to wrap up today's conversation. Thank you so much everybody for joining. Thank you Basundhara for joining us. कैसा लगा आके? How was the vibe for you today? बढ़िया, बहुत मजा आया. Thank you for inviting. You guys are doing such a great job. I will become a member, I think. बधाई हो, अरे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो. Yeah. मेरा be happy to जादू know चल गया संकल्प. बधाई हो, संकल्प. I mean, that was I the may not be intention, of able course. to attend everything because time constant वगैरह, but I will try. Yeah, I mean, anyways, like असल में तो हर को अटेंड करता भी नहीं है. मतलब member base just means that you संकल्प are नहीं more. करता हर जगह. हाँ, मैं भी नहीं करता हूँ हर सेशन अटेंड तो. Well, nobody does, and that's not even the point. Being a member just adds more accessibility, and you know, it just adds the opportunity to attend a lot more sessions. जो ऐसे ये हुआ या फिर ऐसे और भी चीजें आ जाती है. But that is separate. We'll talk about it उसके बारे में कभी भी. But thank you so much, Basundhara, for joining, Well, for taking बिठा out के the time. समझाएगा. Yeah, totally my pleasure. तो पूरा. But like सब लोग genuinely, को यार लेकिन weekday है ऊपर से. नहीं सही बात है. सो जाओ. मुझे सोना पड़ेगा अभी. But Sorry, I couldn't fit in the weekend like I promised earlier. नहीं, it's completely fine. And this also works. That in any time, the fact that you accepted to join itself is something that we really appreciate, irrespective of the fact कि यहाँ पे कुछ लोग आपको पहले से जानते कि जानते नहीं है. But you generally also like I have messaged जिस समय बात उस पे हुई है. But अब उसके अलावा भी we got a very essential push when you started to put out our stories around कुछ महीने पहले. I think 8-10 महीने की पहले की बात है. I think when you started to put out our stories, like I used to share the sessions we were doing, and you were like, tag me, I'll put it up, and you know it'll help. And it did help. People like I think Arnav I know has joined via you. I think Oh, okay, is Rahul it? also is mentioned. Me. Shubham is also. I saw Basu's story and then I joined Same, Abstract. I also joined क्योंकि वसेपुर मेरा first session था. Yeah. And Basundhara shared that. So yeah. Same Apu trilogy. सब इधर से आए, इधर से आए. Same Apu trilogy. So I mean, my point is that it genuinely gave us a very good push that we got lovely people like Anshika, Shubham, Arnab who have been here for over a year or more now. And That so time around 25K या 30K पे थे. अभी कहाँ पे हो वसुंधरा आप? 70K. 72. 72. हाँ, मैंने इसको block कर 72. दिया. अरे ये डिस्कशन आ गया. मुझे पता था आएगा. चलो मैं तुमको अनब्लॉक कर दूंगी. अच्छे लग रहे हो. but अभी नहीं, 70. yeah. But And I think it genuinely helped us a lot. And this is a very good quality about you that not everybody has. And I've discussed it with Arnav as well. Like not everybody has that, and it's not even a जरूरी नहीं होता है आपके लिए करना, but you would still put the effort to make sure that मतलब you notice, and I think that is something that really makes up a day or even more for people. Like it for us, it gave a business level push for us in some sense. I didn't even realize it does. business. But no, I कुछ भी never बोल got रहे हो. I think besides everything that makes her a good human. Yeah. I said what I had to say. Yeah. And I remember Sankalp mentioned this in some session काफी पहले, and he was ऐसे ही बात करते करते उसने बोला, you know, gangs of Cinepur, हाँ, she's a very genuine person. और तूने काफी तारीफ करी थी बसुंधरा की, and at that time we were also not that friendly to Basundhara. Like वो तो ग्रुप वो बाद में ऐसा बना एक दिन. लेकिन या मतलब I remember Basundhara pushed me to start my page directly क्योंकि मैंने एक स्टोरी शेयर किया था थप्पड़ वाला, and she was so kind. That थप्पड़ and marriage story वाला ना. Yeah, and I shared it the post with her DM में. मेरे को लगा कि यार she would put it out on her page and मेरे को credit दे देगी, that would be fine.
And she was like कि no, you should put it on your page और अपना खुद का account बनाओ, खुद से start करो. That's why I am here. Like अभी एकदम ऐसा. I think yeah, matlab, I'll just take the opportunity to reiterate same thing. Like not directly, but my main lookout, my inspiration for starting the page was she. Definitely. So and I remember like जब मैंने एकदम पहला post किया, just the first post मैंने किया था, like you know एक to share करा था, if you don't mind, like you please share, because I don't know anything, and you know like I see people reaching out so good to your post. Yeah, she was like kind enough that if you, and like I was just one post told, she wrote in a story, if you want to read good stuff about films, you can follow this page. I was like, wow, so nice यार. तो मैंने तो एक ही लिखा है, अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है. So yeah. उस time पे ना there were only few pages, like Fables of Films था, Humans of Cinema था, and Gangs of Cinepur था. बहुत कम pages थे. अभी तो भंडारा लगा है. Mushroom. Market में. Bhandar. It's good also. It's No, definitely a it's good good. thing. Everyone Yeah. has a platform to express Yeah. themselves. Exactly. It's a good thing actually. And then you like, then you know people shouldn't be too sad कि followers नहीं आ रहे हैं. एक तो ये चूते algorithm, इसको भूल जाओ, ठीक है. तो फिर मतलब, और you people shouldn't be competitive, I think, because ultimately it's about expression of your personality, your likes and dislikes. And हम जो कुछ पुराने लोग हैं, हमको ज्यादा followers आ गए because उस टाइम कम थे. अब हर कोई 100 पेजेस को कैसे फॉलो करेगा, Right. ठीक है. एंड जरूरी नहीं तुम हर किसी को करो, जिसका कंटेंट अच्छा लगे उसको करो, मेरा ना अच्छा लगे अनफॉलो कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट इज द थिंग. इट्स लाइक शुडंट बी अ कंपटीशन. या चिल रहो, मतलब पता नहीं लोग लड़ते वड़ते क्यों है, जो भी है. बट आपको अच्छा है, आपको सोने के पहले एक बढ़िया वैलिडेशन मिल गया वसुंधरा. अच्छी नींद आएगी. आई होप सपने में यही आएगा, तारीफें आएंगी सपने में. थैंक यू सो मच. स्टोरी डाली मैंने, सबकी स्टोरी डाली थी मैंने. But thank you for joining. Thank you everybody else also. Thank you so much for sharing your childhood with us. All the people who have left also. YouTube live तो एक बहाना है हमारा, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट करने का तरीका है. वो 2-4 लोग एक्स्ट्रा देख ले तो बढ़िया ही है, इसलिए हम ऐसे ओपनली हम करना चाह रहे थे. बट उसके अलावा इट्स फॉर अस मेंबर्स ओनली टू इंटरेक्ट बेटर ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. तो अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स होना जो एकदम जनरल है बट जिसमें हम काफी बढ़िया बातें कर सकते हैं, तो जस्ट tell us. We can keep these things happening. We can keep doing these sort of things. Like we don't need to be innovative about it. Keep it as simple as just we are going to do A.R. Rahman music songs and let's call Basundhara again or anybody else again. Like just be as simple as that, and we can make it happen. Like it doesn't take a lot in that sense. So like this particular segment in that sense, this live segment is just to do these undemanding sessions. Like for example, मुझे सिद्धार्थ जैसा जो member है, he's already told me that ब्रह्मास्त्र आने के बाद में आई एम कीपिंग अ सेशन. उसका मन था पहले भी करूं, बट इज अ लिटिल ऑक्यूपाइड राइट नाउ. ही वाज, हिज थिंग वाज अ प्री ब्रह्मास्त्र एंड पोस्ट ब्रह्मास्त्र थिंग. तो प्री तो नहीं हो रहा है, बट पोस्ट ब्रह्मास्त्र इज डेफिनेटली हैपनिंग. लाइक आफ्टर विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर होगा. लाइक जस्ट डिस्कसिंग व्हाट इट वाज रियली लाइक एंड वो सब वगैरह. तो कुछ कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट ब्रह्मास्त्र इज अ टॉपिक. सो इफ यू हैव सच रैंडम टॉपिक्स इन माइंड, यू कैन डू दीज थिंग्स. टाइम इज स्टिल नॉट अ कंसर्न बिकॉज 1000 लोग तो देख नहीं रहे हैं. हम 15 लोग मैक्सिमम, 20 लोग मैक्सिमम देखने के लिए आते हैं, एंड दैट्स फाइन. The fact is that we are trying to have some engagement on our YouTube channel, even though that's not a priority, but it's good to have something documented somewhere, which is why we are putting it out on YouTube as a separate segment. एक classified एक तरीके से अलग से है, पूरा categorized है. किसी को अगर दिखाना हो कि हम क्या करते थे, यहाँ से दिखा सकते हैं, उसी का intention है. तो if you haven't liked this stream, let me use the YouTubers term and tell you, please like the stream if you haven't already. Please कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एब्स्ट्रैक्ट इंडिया के चैनल को. और बेल बटन को दबाएं. बेल बटन को दबाएं. Thank you so much guys.